Cries of catch it there, coming back, some technical error. Please bear with us, we could not talk. And now that we are in air, for you who have joined us late, to tell you that this morning when the toss was won by Abhishek Desai of Sairaj Warriors, and he elected to ball first, asking KR Shetty to bat, and in doing so, KR Shetty Kings have managed to put up 6 runs on the board there. This is going to be a very interesting contest between bat and ball between KR Shetty Kings and Sairaj Warriors. Good bowling there, again played with soft hands, Prashant Lander towards the short cover region. For a single as the batsman crossed over, the scorecard further ticks along to 7 runs. Good bowling there outside the off stump by the bowler Narendra Mangore into the hands of the keeper for a dot ball. Well, to tell you that the ball bouncing more than anticipated to the batsman Darshan Patil. Darshan Patil trying to go onto the front foot and trying to play him, beating all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Good cut shot there, wideish of third man, got to wait. Boundary there, third man field, just a spectator. Boundary signal by umpire Mansoor, acknowledged by my scorer. 4 more for the taking. With that, 4 runs, the scorecard ticks along to 11 runs now. And Darshan gets his first boundary of his bat, and it also completes the over. So after the completion of 2 overs, a scorecard reading 11 runs, no wickets lost as yet. Darshan Patil is batting on 7 runs of the 5 deliveries, and Prashant Lander is batting on 2 runs. Again trying to cut him there outside off stick into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 11 runs. Good dot ball to begin there with the bowler being Aniket Lohar. He's given away 5 runs in the first over that he bowled there. Aniket Lohar. Again to the batsman Prashant Lander. Played it upishly into the cover region. We have a sweeper cover back at the fence there, slightly fumble, but just 1 for the taking. They have to settle down with a single. The fielder at deep sweeper cover
coming quickly to his right and fielding it. Batsman cross for a single. With that single taken, the scorecard ticks along to 12 runs. Again, cut him this time. Oh, what a catch it would have been if the fielder had to take it at the curly. And 2 runs for the taking by the time the fielder comes in and fields there, chasing behind. Good try and good effort by the fielder at point. It would have gone down as one of the finest catches in this match and the tournament. But full marks for the efforts and try. Jumping in the air to the left side. Darshan survives. 2 more for the taking. Down the leg side there should be a wide. With that wide and extra, the scorecard ticks along to 15 there. Again, cut him there this time. Beautiful shot, bisecting the fielder at point and gully. Just a spectator there. The fielders. Good shot by Darshan Patil. That shot, Darshan moves to 13 runs and takes the scorecard ticking along to 19. Again, good shot there, played off his pads towards square leg. The fielder from deep mid wicket comes in, Shubham there, and fields it. Good fielding and good throw by Shubham Gondwadkar as the batsman crossed over for 1 more. With that single taken, the scorecard ticks along to 19. Good shot there, flicked off his pads there. Darshan again towards mid-wicket. Shubham Gondwadkar comes in and fields the batsman cross for another single. With that single taken, it also completes the over and the scorecard ticks along to 21. 3 overs have been bowled and the scorecard reading 21. On the scorecard after the completion of 3 overs, and they're going at a current run rate of 7 runs per over. Darshan Patil is batting on 14 runs of 8 deliveries with 2 boundaries, and Prashant Lander is batting on 4 runs of the 10 deliveries. Well, the opening pair and stand, they have put up a partnership of also 21 runs of partnership. Again, good ball there by Narendra Mangore. Dot ball to begin with. Narendra Mangore has given away 6 runs in the first over that he has bowled. He's bowling his quota second over now. Again, played it uppishly, wideish off mid-on. The mid-on fielder goes back and fields there. Abhishek Desai, the batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard ticks along to 22 now. Down the leg side, wide signal by umpire Mansoor, acknowledged by my scorer. 1 more for the taking in the form of an extra.
Scorecard ticks along to 23. Going to the pitch of the ball and driving him off the front foot there. Good shot by Darshan Patil. Straight to the fielder at point for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 23. Play with soft hands again, and this time to the gully region. They are trying to use the pace of the ball. Darshan trying to steer it down towards gully region. Fielder coming in and fielding for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 23 now. Darshan Patil is batting on 14 runs of the 10 deliveries that he has faced. Prashant Lander on 5. What a shot that is up to the pitch of the ball. One bounce over the fence in the sweeper cover region for a boundary. Lofted drive there by Darshan Patil. With that boundary, the scorecard moves to 27. Good shot there by Darshan Patil there, the captain. Standing up, going to the pitch of the ball and driving it uppishly as all the fielders inside the circle. Good shot there by the batsman Darshan Patil. Oh, what a ball that is, beautifully balled and equally well taken by Sudeep Satheri there, trying to steer it down towards third man, got the edge of the bat, thick edge of the bat, and the ball going towards the wicket keeper. Good catch there by Sujay Satheri, going down and taking it one hand quickly. The ball did stick in his webbing there. Good catch. The first wicket goes down in the form of Darshan Patil there. Ball Narendra Mangore caught by Sujay Satheri, the wicketkeeper behind stumps. Made it look so simple in the end. One of the better wicket keepers in this tournament, I would say. So the first wicket goes down in the form of Darshan Patil, the captain for KR Shetty Kings, at a score of 27 on the scorecard, and Darshan got 18 runs of the 12 deliveries with 3 boundaries. Well played for his 18. They also got a good partnership for the opening stand of 27 runs of partnership between Prashant Lander and Darshan Patil. Well, it's Vaibhav Kuribagi walking onto the crease there, another young lad and very talented with bat and ball. Vaibhav Kuribagi comes into the act at the fall of Darshan Patil. So Sairaj draw the first wicket, the first blood there in the form of Darshan Patil. And now Darshan Patil back in the hut. He'll definitely have a piece of advice as to how the pitch is playing and the conditions out there in the middle. Good catch there by Sujay Satheri. He has taken plenty of catches. Again, this one made it look so simple in the end. So with that wicket taken, it was the last ball of the 4th over, and 4 overs have been bowled, and the scorecard reading 27 for the loss of 1 wicket. Played it uppishly in the cover region there towards the sweeper cover as the batsman crossed over for a single. Good fielding there by the sweeper cover fielder for a single to be given away. With that single taken, Prashant Lander moves to 6 runs and takes the scorecard ticking along to 28 for the loss of 1 wicket. Again down the leg side there, wide given away by umpire Sadiq, acknowledged by my scorer. One more for the taking, one more extra in the form of a wide. The scorecard moves along to 29.
driven it straight to the cover fielder there. The fielder coming in the cover and fielding just towards his left for a dot ball. Good to see Vaibhav Kuribagi driving it up the front foot towards the cover region. Played with soft hands there again, trying to steer it down towards the gully region. The point fielder comes in quickly and fields, importantly, a dot ball. With that dot ball, score still stands at 29. Again with soft hands, wanting a run there this time. A fumble there by the fielder. Maybe quickly did he have to come there. Sudanva, I believe. Kulkarni, if he had to come in quickly, field it, would have been a different story. Slightly fumble there, and the batsman capitalized. And good running and good in the wickets, I would say, to take that run. A cheeky run, stole that run away under the nose of the fielder at gully. Again, bowled him this time. The bowler was appealing, in fact. Aniket Lohar, Prashant Lander trying to play it onto the onside. The ball hitting the pads and then hitting the stumps there. So the second wicket goes down in the form of Prashant Lander. Prashant got just 6 runs for Prashant Lander. He has to walk back to the dugout. And second wicket goes begging in the form of Prashant. So the job they are doing, the bowlers are doing the job for Sairaj. After the captain won the toss this morning and elected to bowl first, and in doing so, they have picked up 2 wickets, that of Darshan Patil and Prashant Lander. So at the fall of Prashant Lander's wicket, it is Pranay Shetty walks onto the crease to face Aniket Lohar. Trying to play a big one there. Pranay Shetty just opens his account and crosses over for a single. With that single taken, the scorecard ticks along to 31 for the loss of 2 wickets after the completion of 5 overs. So with that single taken of the previous delivery, Pranay Shetty opens his account and moves to 1 run. And Vaibhav Kuribagi is also batting on 1 run. Aniket Lohar has bowled 3 overs, given away 19 runs and picked up that 1 wicket of Prashant Lander at an economy of 6.33. And Narendra Mangore has bowled 2 overs, given away 12 runs at an economy of 6 runs and picked up that wicket of Darshan Patil. Well, Krishna Bagadi there, slightly short of length onto the pads of Pranay Shetty. Pranay Shetty quickly goes back onto the back foot and just plays it off his pads towards the mid wicket. Krishna Bagadi himself goes and fields it. The batsman cross for a single. With that single,
Pranay Shetty moves to 2 runs and takes the scorecard ticking along to 32. Flighted delivery there, trying to defend it, played, got a thick edge of the bat there. The ball rolling on towards the fine leg area as the batsman crossover for a single. With that single, Vaibhav Kuribagi moves to 2 runs and takes the scorecard ticking to 33. Down the leg side, wide signaled by umpire. Mansoor acknowledged by my scorer. One more extra in the form of wide there. This is bat bowling there. Offside field given to you by the captain to the bowler Krishna Vagadi. Trying to hit a big one, going down and one knee and hitting towards square leg there. Good shot by Pranay Shetty. First boundary of the bat of Pranay Shetty today, this morning. With that boundary, Pranay moves to 6 runs and takes the scorecard ticking along to 38 for the loss of 2 wickets. Good shot that was by Pranay Shetty, going down and one knee, picking the ball from middle and leg and sweeping it towards square leg boundary. Again trying to hit a big one, trying to go down on one knee and play towards mid-wicket area. The fielder comes in quickly and fields. The batsman crossover for another single. With that single taken, Pranay moves to 7 runs and takes the scorecard ticking along to 39. Flighted delivery into the block hole there, and Kitty this time quickly he himself fielding up his own bowling towards the short mid-wicket area for a dot ball. Good flighted delivery into the block hole and equally well played by Vaibhav Kuribagi, digging it out of the block hole for a dot ball. Watchfully played off the front foot there. Vaibhav Kuribagi going to the pitch of the ball and stretching forward and defending it. A forward defensive shot for a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 6 overs with the scorecard reading 39 for the loss of 2 wickets. Vaibhav Kuribagi is batting on 2 runs of the 6 deliveries. Pranay Shetty is batting on 7 runs of the 4 deliveries. And the partnership between Vaibhav Kuribagi and Pranay Shetty is up to 9 runs now. 9 runs of partnership between themselves for 7 deliveries that they have played. धन्यवाद चेतन। 6 ओवर के बाद 39 2 विकेट के नुकसान पर KR शेट्टी किंग्स। प्रणय शेट्टी मैदान पर है और उनका साथ दे रहे हैं वैभव कुरीबागी। डॉट गेंदों का सिलसिला जारी है इस ओवर का जहां तक सवाल है। बाउंड डाल करके लेग ब्रेक गेंद, बहुत बढ़िया, अच्छी फ्लाइट दे रहे थे लेकिन प्रणय शेट्टी गेंद के ऊपर नहीं पहुंच पाए। खड़े खड़े वो बल्ला चला रहे हैं, कोई रन नहीं बना। इस गेंद को पैडल स्वीप किया है फाइन लेग के इलाके में, एक रन बनता हुआ। और गेंद वापस गौंडालकर के पास। ये गेंद लेग ब्रेक थी और फिर एक बार वैभव कुरीबागी ने कोई कोशिश नहीं की उस गेंद को खेलने की, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। इस बीच इस गेंद को कवच के इलाके में खेलकर 1 रन पूरा किया। रन संख्या 41।
43 हाफ वॉली बनाई, ऑन साइड पर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, 1 रन मिलता हुआ और रन संख्या बनी है 44, 2 विकेट के नुकसान पर। वो थोड़ी तेज गेंद डाल रहे थे लेकिन शॉर्ट हम पुल खेला है प्रणव शेट्टी ने। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा और अब रन संख्या आगे बढ़ती हुई 46, 2 विकेट के नुकसान पर KR शेट्टी किंग्स। कृष्णा बागड़ी राउंड द विकेट, ये गेंद हाफ वाली बनाए, अच्छा ड्राइव खेला है लेकिन स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा और इस 1 रन की मदद से अब 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ओवर चल रहा है ये 8वां। टॉपेज लगकर गेंद हवा में गई है, थर्ड मैन के इलाके में। खेलना कहीं और चाह रहे थे प्रणव शेट्टी लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लिया है, हवा में थी गेंद लेकिन थर्ड मैन के ऊपर गेंद फील्ड हुई, 1 रन बना। इस 1 रन के साथ 8वां ओवर समाप्त हो रहा है और 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 47, 47, 2 विकेट के नुकसान पर। दर्शन पाटिल 18 रन बनाकर आउट हुए, प्रशांत लाइंदर 6 रन बनाकर आउट हुए, वैभव कुरुबागी 6 रन बनाकर खेल रहे हैं और प्रणव शेट्टी 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूर वाले छोर से बॉलिंग का मोर्चा संभालने के लिए तैयार शुभम गंगाड़कर, एक ओवर की गेंदबाजी की है, बड़ी किफायती गेंदबाजी की, 2 ही रन दे रहे हैं। थोड़ी सी हवा में खेला ये स्ट्रोक लेकिन 1 रन बनता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी टर्न ले रही है गेंदें, वैभव कुरुबागी जगह बना रहे थे लेकिन उस टर्न को देखकर उन्होंने छोड़ दिया उस गेंद को विकेट कीपर के लिए। ओ फ्लिपर गेंद डाली है और इस गेंद को स्वीप के अंदाज में खेल रहे हैं और लपेट कर खेला उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन बनेगा। इस 1 रन के साथ अब 49 for 2। ओ ये तो फुल टॉस थी, करारा ड्राइव खेला है प्रणव शेट्टी ने एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद, और जब तक कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर से फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, अभिषेक देसाई 1 रन के साथ 50 का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई है पोद्दार ब्रदर्स KR शेट्टी किंग्स की टीम। एक और फ्लाइटेड गेंद, दमदार ड्राइव लेकिन सीधी बॉलर की दिशा में, 1 बाउंस पर गई गेंद और कोई रन नहीं बना। बड़ी किफायती गेंदबाजी चल रही है शुभम गौंडाडकर की, अच्छा ड्राइव खेला है, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद, स्वीपर कवर के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते हुए लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया। गौंडाडकर का ओवर समाप्त हो रहा है तो कुल मिलाकर 9 ओवर में 51 रन बन रहे हैं। कोई नुकसान, 2 विकेट खो रही है दर्शन पाटिल और प्रशांत लाइंदर के रूप में। विकेटों का जहां तक लेने का सवाल है, अनिकेत लोहार को 1 विकेट मिला और नरेंद्र मांगुरे को 1 विकेट मिलता हुआ। प्रशांत लाइंदर को बोल्ड किया था। कृष्णा बागड़ी गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैभव कुरुबागी और प्रणव शेट्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 51 रन तो निश्चित बने हैं उनके लिए, लेकिन अब जो 11 ओवर हैं इसमें अच्छा स्कोर बनाना होगा शेट्टी किंग्स की टीम को।
ओ क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी गुडलेन पर टप्पा खिलाया, नीचे रही। और रवि पाटिल, माफ कीजिए, रवि पाटिल गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए, और पहली गेंद बहुत बढ़िया डाली उन्होंने। वैभव कुरीबागी कुछ कर नहीं पाए उस गेंद के ऊपर। हाफ वाली बनाई, अच्छा ड्राइव खेला, मिड ऑफ के ऊपर गेंद, मांगुरे खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ। रन संख्या बनी है 52। 2 विकेट के नुकसान पर KR शेट्टी किंग्स। वैभव कुरीबागी 9, प्रणय शेट्टी खेल रहे हैं 13 रन बनाकर। एक बड़ा स्कोर होना चाहिए इस मैदान पर, इस विकेट पर। ओ क्या शानदार पुल खेला है, लेकिन अटक गए जाल में प्रणय शेट्टी। पुल शॉट तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे किशन मेघराज के रूप में, और किशन मेघराज ने कोई गलती नहीं की। वो सपाट जो स्ट्रोक खेला गया था, वो सीधा कैच जाता हुआ किशन मेघराज के हाथों में। एक बढ़िया स्ट्रोक के ऊपर एक बढ़िया कैच। करारा पुल था प्रणय शेट्टी का, लेकिन ऊंचाई हासिल नहीं कर पाए, सपाट गेंद गई, और कोई गलती नहीं की किशन मेघराज ने। तो तीसरा झटका मिलता हुआ शेट्टी किंग्स के टीम को।
और जलपान के बाद अंगद और झिटलमनी आए हैं मैदान पर और ओवर समाप्त हो रहा है। रोहू का एक बड़ा विकेट है रोहू के खाते में, वो भी सबसे विस्फोटक बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ प्रणय शेट्टी का। तो कुल मिलाकर अब 10 ओवर में 52 रन बना रहे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लगा कि प्रणय शेट्टी थोड़े जम गए हैं मैदान पर और कुछ बड़ी पारी वो खेल रही हैं, खेलेंगे आगे चलकर, ऐसा लग तो रहा था। लेकिन वो जो करारा पुल था वो सपाट गया और किशन मेघराज के हाथों में गया वो कैच। वो तेज तर्रार कैच को पकड़ा उन्होंने डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और अब 3 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना रही है शुभम गौंडाटकर। वो कुरुबागी को एक फ्लाइटेड गेंद दे रहे हैं और इस गेंद को सर पर ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अभिषेक देसाई खड़े हैं उस इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या बनी है 53 3 विकेट के नुकसान पर। साईराज पॉइंट्स टेबल पर 1 नंबर पर खड़ी है। अब तक तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं उन्होंने इस लीग में KR शेट्टी मेमोरियल टूर्नामेंट में और कहीं ना कहीं जाकर वो जीत की परंपरा जारी रखने की कोशिश करेंगे। तो KR शेट्टी किंग्स इस जीत की परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रही है और अंगद राज ने हवा में खेला लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट गेंद गिरी उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में। किशन मेघराज खड़े हैं उस इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन 1 रन के साथ खाता खोलने में कामयाब हुए हैं अंगद राज हिटलमनी और पारी की रन संख्या बनी है 54। फुल टॉस थी, सीधा ड्राइव खेला, अभिषेक देसाई आ रहे हैं गेंद के नीचे उस लॉन्ग ऑफ के इलाके से और 1 ही रन बनता हुआ। बहुत बढ़िया फील्डिंग, आउटफील्डिंग बढ़िया हुई और 1 ही रन बना। तो 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर 55 for 3। अंगद राज सामना करेंगे शुभम गौंडाटकर का। इस गेंद को कवच के इलाके में खेला लेकिन रन नहीं मिलेगा। हबीब ताड़पत्री खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। तो सटीक अनुशासित बुरी गेंदबाजी चल रही है। इस बार फिर एक बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद डाल रहे थे, अंगद राज ने ड्राइव किया उस गेंद को लॉन्ग ऑन के इलाके में। अभिषेक देसाई एक बार और हरकत में आ रहे हैं उस गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन 1 रन का इजाफा होने के बाद स्कोर बना है अब तक 56 3 विकेट खोने के बाद। पारी का 11वां ओवर चल रहा है। बड़ी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम। फ्लिपर गेंद डाली और इस गेंद को उन्होंने ऑन साइड पर खेला। वैभव कुरुबागी ऑन साइड पर खेलने के बाद उस लॉन्ग ऑन के इलाके में गेंद फील्ड हुई। 1 रन का इजाफा होने के बाद 11वें ओवर का खेल समाप्त हुआ और 11 ओवर के बाद 57 रन बन रहे हैं KR शेट्टी किंग्स के लिए 3 विकेट खोने के बाद। बॉलिंग की बात करें तो शुभम गौंडाटकर ने अभी अभी 1 ओवर पूरा किया है। 3 ओवर में 11 ही रन दे रहे हैं, वो विकेट नहीं मिला। रोहू पाटिल ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, 1 रन देकर 1 विकेट लिया।
कृष्णा बागड़ी 2 ओवर में 14 रन दे रहे हैं, कोई विकेट नहीं। मांगोरे 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट, और अनिकेत लोहार 3 ओवर में 19 रन दिए हैं और 1 विकेट उनको मिलता हुआ। ये रहा बॉलिंग विश्लेषण साईराज वॉरियर्स की तरफ से। रघु पाटिल तैयार। ओ क्या गेंद डाल रहे हैं, बहुत जबरदस्त गेंद। गुडलेन पर टप्पा खिलाया, सीम पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी कोन बनाकर, एंगल बनाकर बल्ले को छक्का कर गई है। विकेट कीपर सुजय साथी खड़े हैं, उनके दस्तानों में गेंद गई। हल्की सी अपील जरूर कर रहे थे, लेकिन अंपायर मंसूर बड़े भाई के ऊपर कोई असर नहीं है, उन्होंने नाबाद करार दिया। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं सादिक कित्तूर, ये हैं ऑफिशियल्स आज के इस मैच के लिए। सफल हुए, हवा में खेला, लेकिन 30 गज दायरे के ऊपर गेंद गिरी। मांगोरे लॉन्ग ऑफ से आए, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन बनता हुआ वैभव कुरीबागी के खाते में। रन संख्या बनी है 58। 3 विकेट खोने के बाद पारी का 12वां ओवर प्रगति पर है। बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट किया, लेकिन पॉइंट पर खतरनाक तरीके से रन ले रहे हैं। जरूर थोड़ा जोखिम उठा रहे हैं, पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग और थ्रो हुआ। वैभव कुरीबागी भागे जरूर थे रन लेने के लिए, सटीक निशाना स्टंप्स के ऊपर लगता तो थोड़ी सी दिक्कत में वो आ सकते थे, लेकिन निशाना नहीं लगा स्टंप्स के ऊपर, लेकिन अंततः 1 रन बना। और अच्छी गेंद थी, गेंद को आने दिया बल्ले के ऊपर, उसके बाद बल्ले का मुंह तिरछा किया, उस गली के इलाके में खेला और 1 रन दौड़कर वैभव कुरीबागी पूरा कर रहे हैं। अब वैभव कुरीबागी जा पहुंचे 14 पर। अंगदराज खेल रहे हैं 3 रन बनाकर, और पारी की रन संख्या बनी है अब 60 3 विकेट के नुकसान पर। तो रनों की रफ्तार कम होती जा रही है, जैसे जैसे ओवर बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे। इस गेंद को लेट कट खेला है, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर तैनात, 1 ही रन बनता हुआ। रन संख्या 61 पर 3। रघु पाटिल फिलहाल कोई हाथ खोलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं सभी गेंदबाज साईराज के, और आने दिया गेंद को बल्ले के ऊपर, उसके बाद कलाइयों को मोड़कर उस गेंद को वैभव कुरीबागी वाइड लेग पर खेल रहे हैं। 1 रन बनेगा, ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 12 ओवर में 62 रन बन रहे हैं। वैभव कुरीबागी 15 रन बनाकर खेल रहे हैं और अंगदराज 4 रन बनाकर। और ड्राइव किया उस गेंद को, दमदार ड्राइव था, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिल रहा है वैभव कुरीबागी को। अब रनों की जरूरत है, क्योंकि रन रेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। T20 के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं अब गियर बदलने होंगे, भले ही 3 विकेट खोए हों, लेकिन इन दोनों के पास अच्छी क्षमता है बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। हल्के से इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में घुमाकर खेला, पहला रन बहुत तेज, दूसरे की मांग हो रही है और निश्चित दूसरा रन भी बनेगा, क्योंकि वहां पर किशन मेघराज ठीक तरीके से गेंद को रोक नहीं पा रहे हैं उस मिड विकेट के इलाके में, और मौके की ताड़ में थे। दूसरा रन भी पूरा किया, और अब इन 2 रनों की मदद से रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 64 3 विकेट के नुकसान पर। शुभम ये गेंद, और इस बार करारा ड्राइव, फिर एक बार सरपट गेंद आई है। ओ खराब फील्डिंग का नमूना, 4 रन बोनस, ये तो बोनस, और ये बहुत देर के बाद ये चौका आ रहा है।
अब कहीं जाकर थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं बल्लेबाज, भले ही मिस फील्डिंग हुई हो लेकिन 4 रन आए हैं। कौन है वो फील्डर? अनिकेत लोहार शायद, जी हाँ बिल्कुल अनिकेत लोहार ने मिस फील्डिंग की है। फ्लाइट गेंद, फुल टॉस बनाया, मिड विकेट के इलाके में ड्राइव किया, 4 रन मिलेंगे। अब देखिए एक चौका मिस फील्डिंग का बनने के बाद बल्लेबाजों का मनोबल अब 7वें आसमान पर। तो अंगदराज हिटलमनी उस वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में चौका बना रहे हैं। अब थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी है रनों की, जो बिल्कुल धीमी पड़ रही थी, ये और थोड़ा सा अच्छा है केआर शेट्टी किंग्स के लिए। ऑफ द टूस फ्लिक किया मिड विकेट के इलाके में, पहला रन बहुत तेज पूरा किया, लेकिन उससे भी कई ज्यादा तेज फील्डर आए उस गेंद के ऊपर। कृष्णा बागड़ी छोटे नाटकत के खिलाड़ी है, लेकिन चीती की चपलता दिखाकर उस गेंद को उन्होंने रोका, सफाई के साथ थ्रो भी किया। 1 रन बना, रन संख्या बनी है 74। 3 विकेट के नुकसान पर 74 for 3। 13वां ओवर पारी का चलता हुआ। शुभम गाउंडाडकर फ्लिपर गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन के इलाके में अनिकेत लोहार इस बार कोई गलती नहीं कर रहे हैं, सफाई के साथ गेंद को रोकने के बाद। ये थोड़ा सा ओवर महंगा साईराज वॉरियर्स की तरफ से, और ये ओवर कहीं ना कहीं केआर शेट्टी किंग्स को दिलासा दे रहा है कि इस ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं, और रनों की रफ्तार जो थोड़ी सी सुस्त पड़ी थी, उस रफ्तार को थोड़ी सी गतिशील बनाने में कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर 75 स्कोर बनता हुआ 13 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद। 17 गेंदों पर 17 सिंगल्स बना रहे हैं। 26 गेंदों का सामना किया, 17 सिंगल्स में रन बना रहे हैं। उनके खाते में अब तो कोई चौका नहीं है, लेकिन अंगदराज के खाते में 2 चौके शामिल। तो कुल मिलाकर देखेंगे आप तो 6 चौके आए हैं अब तक। अब देखिए वैभव कुरीबागी का बल्ला चला और गेंद डॉक्टर पुनीत राजकुमार डगआउट के ऊपर गिरी है, छक्का बनता हुआ। काफी देर से वो संयम की पारी खेल रहे थे, लेकिन अब कहीं जाकर उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स खेलेंगे। राहुल पाटिल का स्वागत इस ओवर में वो छक्का लगाकर कर रहे हैं, और इस छक्के की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 81। इस बीच इस गेंद को संयम के साथ खेल रहे हैं। छक्का लगने के बाद अपने आप को ठंडा रखकर इस गेंद को उस गली के इलाके में खेला। कुरीबागी ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 82, 82 for 3। राहुल पाटिल राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे अंगदराज हिटलमनी के लिए, और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उस वाइडिश मिड विकेट के इलाके में खेला अनिकेत लोहार। फिर एक बार ठीक तरीके से गेंद को रोक नहीं पा रहे हैं, और मौके की ताड़ में है बैट्समैन। आप डीप में थोड़ी भी मिस फील्डिंग करोगे तो दूसरा रन जरूर बनता हुआ बल्लेबाजों को। 84, 84 for 3। अच्छे रन आए हैं इस ओवर में भी शेट्टी किंग्स के लिए। ये गेंद थोड़ी नीचे रही, टप्पा पड़ने के बाद थोड़े से निराश हैं अंगदराज हिटलमनी, क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क होता तो रन बनते, लेकिन छकाने के बाद गेंद गई सुजय सातरी के दस्तानों में, कोई रन नहीं। और वापस राहुल पाटिल। हाँ, इस बार इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, स्टीयर किया था उस गेंद को थर्ड मैन के इलाके में, 1 रन का इजाफा होता हुआ।
85, 85 for 3। अब धीरे धीरे रनों की रफ्तार जो कम हो रही थी पिछला ओवर और ये ओवर रनों की गति बढ़ाने में मदद कर रहा है कि आर शेट्टी किंग्स के लिए। और अब ये 2 सेट बल्लेबाज हैं मैदान पर। अब देखिए सुजय साथी स्टंप्स के नजदीक आकर खड़े हैं। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद डाल रहे थे, हल्के हाथों से धकेल कर खेला। कवच के इलाके में खुद रघु पाटिल जा रहे हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 14वें ओवर का खेल समाप्त होने के बाद के आर शेट्टी किंग्स 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत और इस बार इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेलकर वैभव कुरीबागी 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं और रन संख्या बनी है 87 3 विकेट के नुकसान पर। 87 for 3। इस जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर है। एक अच्छी रन संख्या बनाने के लिए इन दोनों को विकेट पर रहना जरूरी है अंत तक। अंगदराज ने धकेला, कवच के इलाके में गेंद, हबीब ताड़पत्री आए हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े कीमती रन माने जाएंगे। T20 के फॉर्मेट में हर एक रन हीरे की तरह कीमती होता है। और अब रन संख्या बनी है 88 88 for 3। 15वां ओवर पारी का चल रहा है। कृष्णा बागड़ी की अगली गेंद, इस बार ड्राइव किया लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद गई है। अनिकेत लोहार ने अच्छी फील्डिंग की, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन बाल बाल बचे हैं। थोड़ा सा वाइड हुआ उनका, लेकिन थोड़ा जोखिम भी उठा रहे हैं अंगदराज हिटलमनी और वैभव कुरीबागी। और अब देखिए स्कोर बनता हुआ 90 for 3। अच्छे खासे रन आ रहे हैं, पिछले 2 ओवर में आए हैं, अच्छे रन आए हैं, इस ओवर में भी रन आ रहे हैं के आर शेट्टी किंग्स के लिए। तो कहीं ना कहीं जाकर 140-50 का आंकड़ा छूने में अगर कामयाब हुई यहां से लेकर आगे तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल माना जाएगा। बागड़ी की ये गेंद उठा दिया हवा में गेंद, लेकिन कोई खतरा नहीं है। मिड विकेट के इलाके में गेंद, मांगुरे ने गेंद को फील्ड किया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वो कर रहे हैं, पहले प्रयास में गेंद को फील्ड नहीं कर पा रहे हैं और 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब 92 रन बने हैं 92 for 3। वैभव कुरीबागी 30, अंगदराज जा पहुंचे 19 पर। बागड़ी कर ली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर तेज डाल रहे हैं और गेंद अच्छी खासी घूम कर गई है सुजय सातरी के दस्तानों में। कोई रन नहीं बना, डॉट गेंद। हल्के से धकेला, कवच के इलाके में खुद कृष्णा बागड़ी जा रहे हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन 1 रन का इजाफा होने के बाद ये ओवर अब बागड़ी का समाप्त हो रहा है। तो 15 ओवर के बाद 93 रन बना रही है 3 विकेट के नुकसान पर। अब 5 ओवर का खेल बाकी है और इन 5 ओवर में कितने रन और जोड़ेंगे के आर शेट्टी किंग्स की टीम, ये देखना बड़ा रोचक होगा। और ये रोचकता आगे बढ़ाने के लिए
राहुल पाटिल क्या करारा शॉट था, लेकिन अच्छे फील्डर हैं मांगोरे, उनके पास गेंद गई है और रन संख्या आगे बढ़ रही है 95। अब धीरे धीरे वैभव कुरिबागी और अंगदराज थोड़ी आक्रामकता लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी के दौरान। इस गेंद को अच्छी तरीके से मिड विकेट के इलाके में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को रोककर थ्रो किया, सटीक थ्रो, लेकिन 2 रन। 97। 34 पर वैभव कुरिबागी खेल रहे हैं। 36 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है और अंगदराज टिलमनी 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, 17 गेंदों का सामना किया है। इस बार ड्राइव किया, इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में अभिषेक देसाई खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन बनेगा। 98 for 3। पारी का 16 ओवर प्रगति पर है। इस गेंद को कवर्स के इलाके, मिड ऑफ के इलाके में खेला, हबीब ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन ही बनता हुआ। रन संख्या बनी है 99। 99 for 3। 16वां ओवर पारी का चल रहा है, आखिरी गेंद है इस ओवर की, इसके बाद और 4 ओवर का खेल बाकी है। और टॉप एज लगकर गेंद हवा में, ओहो, इससे बुरी बात हो नहीं सकती। ये आसान कैच था, लॉलीपॉप कैच था फील्डर के लिए। ओहो, सबसे बुरी बात कि राहुल पाटिल एक और झटका दे तो रहे थे जरूर, लेकिन कैच को ले नहीं पा रहे। शायद शुभम गंगाटकर हैं, मेरी नानी दादी चाची होती तो भी ये कैच पकड़ती, इतना आसान था कैच उनके लिए। बहुत हवा में गेंद थी, समय भी बहुत था उनके पास और सही समय पर वो गेंद के नीचे भी थे, लेकिन हाथों से गेंद छिटक गई और जीवन दान मिलता हुआ। वैभव कुरिबागी जैसे बैट्समैन को जीवन दान देना इन अंतिम 4 ओवर में कहीं साईराज वॉरियर्स को महंगा ना साबित हो जाए, क्योंकि वैभव कुरिबागी इस स्कोर पर जबरदस्त खेल रहे हैं। अभी तक 37 रन वो बना रही हैं 25 गेंदों पर, एक ही छक्का शामिल है, कोई चौका नहीं है उनके खाते में। अंगदराज 21 पर खेल रहे हैं, 2 चौकों की मदद से 18 गेंदों का सामना किया है। अब 4 ओवर का खेल बाकी है और इन 4 ओवर में जो भी रोचकता बची है उस रोचकता को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरे साथी कमेंटेटर चेतन बैलूर को। अंग्रेजी के हमारे कमेंटेटर चेतन बैलूर, आइए।
Full toss there to the batsman Angadra Hitalmani, driving it all around the carpet towards long off for a run. With that run taken, the scorecard ticks along to 104 now for the loss of 3 wickets, and a good partnership of 52 runs between Vaibhav Kuribagi and Angadraj Hitalmani. Vaibhav Kuribagi is batting on 37 and Angadraj is batting on 24. Full pitch delivery over the ballers head there towards long on and long off, bisecting the fielder as straight as an arrow there for a boundary. With that boundary, the scorecard for the ticks along to 108 runs. Vaibhav Kuribagi moves to 41 of 39 deliveries. A good partnership of 56 runs now of 42 deliveries. Again, full toss, but straight to the fielder, Vithal there. Habib. It's Habib Tarpatri. One for the taking. With that one, it gets Angadraj Hitalmani on strike, and the scorecard ticks along to 109. Again, trying to steer it down using the pace of the ball there towards the shot third man up in the circle as the batsman crossover for a single. With that single, Angadraj moves to 25 and takes the scorecard ticking along to 110 runs. That gets Vaibhav Kuribagi on strike, who's batting on 42. Again, full toss. It's a no ball. Yes, it would be called a no ball there. And to tell you that they have to settle down for a single, to be called as a no ball there, and dangerous bowling. So 2 runs for the taking. The ball slipping out of the hand of Narendra Mangur. The last 3 times that he has bowled, all full tosses above waist height this time. Maybe he's trying to york the ball there. Also, warning given to the bowler of that bouncer, and also a free hit. Trying to hit a big one, cross-batted shot towards long on. Abhishek Desai comes in and fields the batsman crossover for another single. With that single taken, it also completes the overs. After the completion of 17 overs, the scorecard reading 113, 113 for 3. Vaibhav Kuribagi batting on 43, Angadraj Hitalmani on 26, and a good partnership of 61 runs of 46 deliveries that they have bowled. Another 3 overs left over in this innings before the completion, and KR Shetty Kings are going at a current run rate of 6.65 runs per over. And then at this rate, they should go somewhere between 135 to 140. They'll have to put up on the board. I would say that would be a good score on this kind of a pitch there. It is not easy to bat out, let me tell you, because yesterday it rained, and then the dampness, the juice in the pitch, though they were asked to bat first this morning, they managed to get 113 after the completion of 17 overs. Again, trying to hit a big one, taking the edge of the bat and rolling towards shot third man. The batsman crossed over for a single. With that single taken, the scorecard ticks along to 114, and Angadraj moves to 27. Vaibhav Kuribagi on 43. Again, swinging it towards wideish of long on Abhishek Desai. There comes in and fields. Batsman cross for a single. With that single taken, the scorecard for the limps along to 115. The scorecard moves to Vaibhav Kuribagi on 44. Again, this time he's been clean bowled there, trying to paddle sweep it towards fine leg. The ball hitting the leg stump, missing it completely, trying to go across and play it, paddle sweeping it, missing it, and the ball hitting the leg stump from behind the legs.
So the fourth wicket goes down in the form of Angadraj Hittalmani, who managed to get 27 runs. At the fall of Angadraj Hittalmani, it is Rabbani Dafedar walking onto the crease there at the fall of Angadraj Hittalmani, who played a good knock on innings of 27 for himself and the team. Also, the partnership was 62 runs there between Angadraj and Vaibhav Kuribagi. Well played for his 27 there, Angadraj Hittalmani. Rabbani Dafedar walking onto the crease. Oh, he's been clean bowled there. Rabbani Dafedar trying to hit a big one. That was what was told to him. You have to go and hit some big hits there. Trying to hit a big one over mid wicket. The first ball he played was clean bowled. So now the ball, Krishna Bagdi on a hat trick there. In 2 balls, he's got 2 wickets. So it's 115 for 5. The 5th wicket go down is of Rabbani Dafedar, clean bowled. First ball that he played out on a duck. And to replace Rabbani Dafedar, it is Dominic Fernandes. Dominic Fernandes going on to the crease now. To play Krishna Bagdi, who's on a hat trick. Krishna Bagdi in his 4th over, 3.4 overs his ball, given over 23 runs and picked up 2 wickets at an economy of 6.27. Can he get a hat trick in this tournament now? Dominic Fernandes to face Krishna Bagdi. Trying to hit a big one. What a shot that is at the bat of Dominic. First ball that he played, a huge 6 there. Good shot by Dominic Fernandes. With that 6, the scorecard ticks along to 121 for the loss of 5 wickets. The first ball that Dominic Fernandes played hits a 6 there, hit for a 6. With that 6, as I say, the scorecard moves to 121 for the loss of 5 wickets. Going on the back foot and watchfully playing there. A chance, a direct hit, but misses it. Kishan coming and trying to field and cover it. 1 more run for the taking there. And 3 for the taking now. So there was just 1 run for the taking. If the ball had to hit the stumps directly, it would have been a certain run out. But 3 runs for the taking. 3 runs coming in. With those 3 runs, the scorecard now ticks along to 124. And it also completes the over after the completion of 18 overs. The scorecard reading 124 for the loss of 5 wickets. Good 9 runs of partnership of 2 balls between Vaibhav Kuribagi and Dominic Fernandes now.
split of his pads there, Dominic, towards the mid-wicket. Long on fielder comes in and fields wanting 2-2 is the call, and 2 runs overtaking. Good running by the batsman, I would say. Good shot as well of the pads there. Played it upishly towards wideish of long on, and played it with soft hands also. The ball slowly going to the field. If the ball had to go quickly, maybe they would have not had a chance, but good running by these two batsmen for 2 runs. With those 2 runs, the scorecard further ticks along to 126 now. Again, short of length, trying to play a big one, trying to play it onto the onside. Beaten all ends up. The ball just hitting the pad and rolling onto the pitch area there. Importantly, a dot ball for Sairaj Warriors and Narendra Mangore for a dot ball. Again, Sharaf Lander tries of catch it, and a good catch there at square leg. Dominic Fernandez trying to play a big one there, and I think is Krishna Vagadi here at the square leg, coming in, moving to his left and judging the ball to perfection. Good catch to dismiss Dominic Fernandez, who got 11 runs of the 5 deliveries. Well played for his 11 runs of the 5 deliveries. Good cross-batted shot there by the batsman again to the mid-wicket area, and good fielding as well. 1 run for the taking. With that 1 run, Vaibhav Kuribagi moves to 45. That gets Yasir Nihal on strike. Yasir Nihal to face his first ball to the ball, and Narendra Mangore. Again, hit it a lofted drive straight, but it crossed here towards the field. 2 is the call, and 2 good runs there by these two batsmen. Vaibhav Kuribagi, quick in a flash, running towards the danger end, completed that run pretty comfortably and easily. 2 more for the taking. With those 2 runs, Yasir Nihal opens his account and takes the scorecard ticking along to 129 for the loss of 6 wickets. Again, driving it there towards the short cover region. Habib Talpatri comes in and fields. The batsman cross over for a single. With that single taken, it also completes the 19th over. So after the completion of 19 overs, the scorecard reading 130 for the loss of 6 wickets. 19 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 130 रन, 6 विकेट के नुकसान। Full pitch delivery there, driven it all along the carpet towards long off. Narendra Mangore comes in and fields. 2 is the call, and 2 good runnings, I would say, there by the batsman. You don't see that from the fielder like Narendra Mangore, but Narendra Mangore come in quickly and fielded it
2 runs for the taking. Good 2 runs by these two batsmen to take the scorecard ticking along further to 132. Yasir Nihal goes to 5 runs of the 3 deliveries. What a shot that is at the bat of Yasir Nihal. The ball going outside the boundary line for a 6 there. With that 6 make that 138 for the loss of 6 wickets there. With that 6, Yasir Nihal goes to 11 runs of the 4 deliveries. This is good batting, exceptional batting by Yasir Nihal. So good 12 runs of partnership between them of the 5 deliveries now between Vaibhav Kuribagi and Yasir Nihal. Again, driven it all along the carpet towards the field. Wanting to towards the call there. You've got to wait and watch. And this time, no says umpire. He's got for the 3rd umpire, television umpire. Well, it's been judged out by the 3rd umpire there. He's well falling short of the crease there. So the 7th wicket goes down in the form of Yasir Nihal trying to take that 2nd run. Just 1 run will go into the account. Nevertheless, 2 runs wanting maybe for the team and doing the right thing, trying to gather more runs for his team there. He's been run out. Very tight there, touch and go, but well played for his 11 runs of the 5 deliveries that he played. Yasir Nihal. For his 12 runs, I would say 12 runs for his 5 deliveries that he played. At the fall of Yasir Nihal, it is Prasad Nakadi walking onto the crease there. The scorecard reading 139. Into the block hole, good bowling there by the bowler Aniket Lohar, straight to the fielder at long run Abhishek Desai. 1 more for the taking. With that single, the scorecard for the ticks along to 140. 2 more deliveries left over, and to tell you that Vaibhav Kuribagi is batting on 45. Good 45 runs that Vaibhav Kuribagi is playing on. Trying to play a big one, scooped up in the air, 3rd man coming on red, Shubham. Again, this time he does not make any mistake there. And the wicket goes down begging. So 8th wicket goes down in the form of Vaibhav Kuribagi, who got 45 runs of 44 deliveries, 1 6 and 1 boundary. Well played for his good 45 runs there by Vaibhav Kuribagi. Coming at the fall of the 1st wicket. Stood there all the 19 overs. He played well enough. Well played there by Vaibhav Kuribagi. At the fall of Vaibhav's wicket, it is Amit Yadav, Bhuma, walking onto the crease there. As the batsman crossed over, he will be just at the non-striker's end, and Prasad Nakadi to face the last delivery of the innings. 140 for 8, the completion of 19.5 overs. Again trying to hit a big one towards mid wicket. Kishan Megraj coming in and fielding there, wanting to take the call towards
wicket keeper there. The wrong end the throw going to. Good fielding there, but wrong throw at the wrong end. And with that, 2 more runs for the taking, and they complete their 20 overs of the innings, putting up a target of 143. They've got 142 on the board for the loss of 8 wickets. To tell you that, Sairaj Warriors this morning won the toss and elected to ball first, and in doing so, they picked up 8 wickets and given away 142, setting a target for themselves of 143. Well, Amit Yadav was involved in just 2 runs, running around and making 2 runs without even facing the ball, but a good contribution there, I would say. So at the innings, Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it just like the sunrise. We gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it just like the sunrise. We gonna let it out. my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me,
going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna take me, you can try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going aimless, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love
तो ये मुकाबला बड़ा अच्छा होगा। दोनों टीम्स बड़ी अच्छी हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं, और ख़ास तौर पर के आर शेट्टी किंग्स को जीत अनिवार्य है अपना सफ़र आगे बढ़ाने के लिए। तो वो हर संभव कोशिश करेगी साईराज वॉरियर्स को रोकने की, तो जीत की परंपरा जारी रखने की कोशिश करेंगी साईराज वॉरियर्स। डोमिनिक की गेंद का क्या जबरदस्त ऑफ द टोस फ्लिक किया, स्क्वायर लेग के इलाके में खरा फील्डिंग। वैभव कुरीबागी एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं, लेकिन ये गेंद उनको चकमा देकर गई है 4 रन के लिए। ये अपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं कप्तान वैभव कुरीबागी जैसे फील्डर के तरफ से कि वो कोई आसान फील्डिंग को चौके में तब्दील करें, लेकिन बहुत शानदार स्ट्रोक खेला था ऑफ द टोस, जाकर कलाइयों को मोड़ कर खेला था सुधनवा कुलकर्णी ने। इस चौके की मदद से सुधनवा जा पहुंचे 9 पर। पारी की रन संख्या साईराज 9 रन। ओ नीचे रही गेंद, फिर एक बार पैड के सहारे रोका प्रणय शेट्टी ने उस गेंद को। अच्छी वापसी डोमिनिक फर्नांडिस की, थोड़ी यॉर्कर लाइन की डाल रहे थे गेंद पिछली, और लेग स्टंप के ऊपर जैसी गेंद मिली, सुधनवा कुलकर्णी ने बड़ी शानदार तरीके से उस गेंद को खेला था 4 रन के लिए। डोमिनिक फर्नांडिस की अगली गेंद, ओ कट किया पॉइंट के सर के ऊपर से 4 रन। छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे थे, जगह बनाने का मौका मिला, विड्थ जो मिले उस विड्थ का फायदा उठाया, और क्या करारा स्क्वायर कट खेला उन्होंने। पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद गई 4 रन के लिए। 2 चौके आए इस ओवर में, रन संख्या बनी है 13। कोई नुकसान नहीं हुआ अब तक। 13 के 13 रन सुधनवा कुलकर्णी के खाते में जा रहे हैं। सुजय सातिरी ने अभी तक अपना स्कोरिंग का सिलसिला जारी नहीं किया। 2 ही गेंदों का वो सामना कर रहे थे, और दोनों मरतबा गेंद बीट कराती हुई गई थी उनको, इसलिए उनके खाते में अब तक कोई रन तो नहीं है, लेकिन एक छोर पर बड़े आक्रामक नजर आ रहे हैं सुधनवा कुलकर्णी। पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश चल रही है। शॉर्ट गेंद डाली इस बार, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था। सुधनवा कुछ और सोच रहे थे, और उनके हाथ पैर कुछ और कह रहे थे, और एक कूद लगाकर उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, कूद कर, लेकिन संपर्क नहीं कर पा रहे हैं गेंद और बल्ले का। लेकिन डॉट गेंद हो रही है, एक चौका खाने के बाद एक डॉट गेंद। डोमिनिक की अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया, अंदर की तरफ लाई इस गेंद को, गुडलैंड पर टप्पा खिलाया। इन स्विंगिंग गेंद थी, इन कटर गेंद थी, सीधे सीध में आ रही थी बाद में, और इस गेंद को डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई मौका नहीं था सुधनवा के पास। 8 रन आए हैं अब तक इस ओवर में, 2 चौकों की मदद से डोमिनिक फर्नांडिस की गेंदबाजी पर। शॉर्ट गेंद डाली, स्टीयर किया, लेकिन गली में फील्डर मौजूद, गेंद को रोका, रन की कोई गुंजाइश नहीं है, और डोमिनिक का ओवर अब समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक 2 ओवर में 13 रन बने हैं साईराज वॉरियर्स के लिए। अब यहां से लेकर आगे 130 रनों की जरूरत है। 18 ओवर का खेल बाकी, 108 गेंदों का खेल बाकी है, और 108 गेंदों में 130 रनों की दरकार है साईराज वॉरियर्स के लिए। रबानी दफेदार अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर जारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और सामना करेंगे सुजय सातिरी, जिन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। वही फील्डिंग की रचना, 6 फील्डर ऑफ साइड पर और 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर। ओहो, क्या गेंद डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया सुरा बनी गेंद। प्रणय शेट्टी अपने सर पर हाथ रखकर ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो गेंद विकेट लेने वाली थी, विकेट कैसे नहीं मिला। डॉट गेंद, नीचे रही गेंद बहुत रब्बानी दफेदार की,
कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गेंद गिरने के बाद नीचे रहती है। अच्छी गेंद सीध में डाल रहे थे इस बार, और सुजय सातेरी ने रक्षात्मक स्ट्रोक खेला, कोई रन नहीं बना। फिर एक बार डॉट गेंद खेल रहे हैं सुजय सातेरी। खाता खोलने के लिए बेताब हैं, लेकिन अब तक वो अवसर नहीं मिला उनको खाता खोलने का। रन संख्या अभी भी 13 पर रुकी है और अबानी बड़ी अच्छी सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। ओहो, विकेट कीपर प्रणय शेट्टी ने गेंद को रोका जरूर है। वाइड का रन तो जरूर बनेगा। अगर दस्ताने को गेंद नहीं लगती तो निश्चित तौर पर ये वाइड और चौका बनता, लेकिन एक रन भागकर पूरा भी किया है तो 2 ही रन आएंगे। वाइड के जरिए रन संख्या बनी है 15। पहला अतिरिक्त रन वाइड के जरिए बनता हुआ साइराज वॉरियर्स के लिए। लेकिन अब देखिए सुधन्वा कुलकर्णी 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब सामना करेंगे रब्बानी दफेदार का। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद डाल रहे हैं। वाइड का इशारा होता हुआ अब थोड़ी सी लय में गड़बड़ कर रहे हैं रब्बानी दफेदार। एक और रन का इजाफा होता हुआ साइराज के खाते में। रन संख्या बनी है अब 16 बगैर किसी नुकसान के। ओह, क्या बढ़िया यॉर्कर डाली। 2 वाइड गेंदे डालने के बाद एक स्टॉक गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। सीधी ब्लॉक होल में गेंद को डाला और उतनी सफाई के साथ सुधन्वा कुलकर्णी खोद कर खेला उस गेंद को उन्होंने। कोई रन नहीं बना। तो ये एक अच्छी गेंद है यॉर्कर, जो आमतौर पर T20 के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये गेंद एक तो रन बचाती है या फिर विकेट लेती है। और हवा में खेला, मिड ऑन के ऊपर गेंद, कैच को लेने में कामयाब हुए हैं। डोमिनिक फर्नांडिस ऐसे कैचेस नहीं छोड़ते और सुधन्वा कुलकर्णी आउट होकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। इतनी ताकत नहीं लगा पा रहे थे वो उस स्ट्रोक के पीछे। मिड ऑन के ऊपर गेंद हवा में लटक कर गई। 30 गज दायरे के ऊपर खड़े हुए थे डोमिनिक फर्नांडिस। थोड़ा पीछे भागना पड़ा उनको, लेकिन पीछे भागकर उन्होंने इस कैच को लिया और सुधन्वा कुलकर्णी 13 रन बनाकर वापस लौट रहे हैं पवेलियन में। तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। कहीं ना कहीं रब्बानी दफेदार को एक विकेट अब मिलता हुआ, क्योंकि कोई भी गेंदबाज जब अच्छी गेंदबाजी करता है तो निश्चित तौर पर वो चाहता है कि मैं इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं, कुछ विकेट मिले उनके खाते में। वैसा ही हुआ कि रब्बानी को अब एक विकेट मिलता हुआ और वो भी सुधन्वा कुलकर्णी का। तो 16 पर पहला विकेट खो रही है और अब आए हैं नए बल्लेबाज मैदान पर हबीब ताड़पत्री। हबीब का बल्ला अभी तक बोला नहीं है इस टूर्नामेंट में। आज देखेंगे हबीब ताड़पत्री सुजय सातेरी का साथ किस तरीके से निभाते हैं। लेकिन जब स्ट्रोक खेल रहे थे तब छोर बदल रहे थे सुजय सातेरी, इसलिए स्ट्राइकर इन पर सुजय रहेंगे और हबीब जाएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर।
इस गेंद को बहुत देर के बाद 1 रन अपने खाते में जोड़ने में कामयाब हुए हैं सुजय सातरी। लेग स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद को हल्के से कलाइयों का सहारा लेकर मोड़ा था स्क्वायर लेग के इलाके में। वैभव कुरीबागी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन अंततः सुजय सातरी लंबे इंतजार के बाद अब उनके खाते में 1 रन जाने के बाद ओवर समाप्त हो रहा है रब्बानी दफेदार का। कामयाब ओवर था ये और 17 पर 1 विकेट खो रही है साईराज वॉरियर्स की टीम। ओवर समाप्त हुए हैं 3 और 3 ओवर में 17, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, डोमिनिक फर्नांडिस पहले ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हुए, उसके बाद उनको विश्राम देने का फैसला कर रहे हैं कप्तान। और अब अंगदराज हिटलमनी जो कि एक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, उनको लाया जा रहा है गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। क्या बढ़िया गेंद अंगदराज की, क्या टोर ले रही है। सुजय सातरी सकपका गए उस गेंद को देखकर, थोड़ी हड़बड़ाहट महसूस कर रहे थे उस गेंद को खेलने के लिए। जैसे तैसे बल्ला डालने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन चकमा दिया गेंद ने। बैकफुट पर गए, पंच किया, लेकिन रन नहीं मिलेगा। उस एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात, गेंद को रोकने में सफल, कोई रन नहीं बना। वापस चले अंगदराज हिटलमनी। बैकफुट पर गए, इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये छक्का बनता हुआ। क्या आसान छक्का बनाया उन्होंने, क्या टाइमिंग, लाजवाब टाइमिंग और बहुत आसान छक्का। कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी सुजय सातरी को। और कमाल की टाइमिंग, और इस कमाल के टाइमिंग के चलते ये छक्का बनता हुआ 7 पर जा पहुंचे सुजय सातरी। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 23 for 1। अंगदराज की ये गेंद, इस बार स्लॉग स्वीप खेला है, गेंद फाइन लेग पर गई है और 4 रन बनते हुए। थोड़ी फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे थे और बहुत शानदार तरीके से इस गेंद को उन्होंने स्वीप के अंदाज में खेला और चौका बनता हुआ। तो पिछली गेंद पर छक्का, इस गेंद पर चौका, 10 रन आए हैं इस ओवर में। धीरे धीरे सुजय सातरी अब लय में आ रहे हैं। बहुत देर से वो विकेट पर खड़े हैं, बहुत देर तक उनका खाता भी नहीं खोला था, लेकिन जैसे ही खाता खोला उन्होंने वो लय में आ गए हैं। 11 पर जा पहुंचे अब सुजय सातरी। एक तरफ से सुधनलाल कुलकर्णी जब हमला बोल रहे थे तब वो खामोश खड़े थे, लेकिन अब बागदौड़ उन्होंने संभाली है और 10 रन आए हैं इस ओवर में। हल्के से धकेला, फ्लिक किया उस गेंद को फाइन लेग के इलाके में। गेंद, 1 रन बनेगा सुजय सातरी के लिए। सुजय जा पहुंचे 12 पर। पारी की रन संख्या बनी है 24 for 1। हबीब ने पहला रन अपने खाते में जमा किया उस लॉन्ग ऑन के इलाके में खेलकर और 4 ओवर का खेल अब समाप्त हुआ और रन संख्या बनी है 29। 4 ओवर में 29, 12 रन आए हैं अंगदराज हिटलमनी के इस ओवर में। हाँ, तो 29 स्कोर कुल मिलाकर बन रहा है 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद। 143 रनों का लक्ष्य साईराज के सामने है और उसका जवाब दे रही है 29, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद।
तो डोमिनिक फर्नांडिस को छोर बदल कर गेंदबाजी करवा रहे हैं कप्तान। एक ओवर उन्होंने पवेलियन छोर से किया तो थोड़े से महंगे साबित हुए, तो अब कहीं जाकर कप्तान ये फैसला कर रहे हैं कि उनको छोर बदल कर आजमाया जाए, क्योंकि किसी गेंदबाज को एक छोर पसंद होता है और उस पसंदीदा छोर से वो गेंदबाजी जब करते हैं तो बहुत सारे कारनामे करके दिखाते हैं गेंदबाज। तो ऐसा कुछ है शायद, इसीलिए छोर बदल कर गेंदबाजी करवा रहे हैं डोमिनिक फर्नांडिस से। इस गेंद को ऑन ड्राइव खेला, मिड ऑन के इलाके में गेंद गई है, रन तो नहीं मिलेगा, मिड ऑन पर फील्डर तैनात, सफाई के साथ गेंद को रोका, रन की कोई गुंजाइश नहीं है और गेंद वापस लेकर चले डोमिनिक फर्नांडिस। ये रोचक मुकाबला होगा, दोनों टीम्स के खिलाड़ी बड़े तगड़े हैं, जुझारू हैं, लड़ाकू खिलाड़ी हैं। ओहो, अच्छी बाउंसर थी, क्या बढ़िया बाउंसर थी। प्रणय शेट्टी की तारीफ करनी होगी, बहुत मुश्किल था लेकिन आसान बना दिया प्रणय शेट्टी ने विकेट के पीछे। छलांग लगाकर उस गेंद को रोका उन्होंने, अन्यथा यह निश्चित तौर पर 4 रन बनते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चलकर आपको कुछ दिलासा देती है, कुछ अच्छे नतीजे निकल कर आते हैं इस तरीके की जब फील्डिंग होती है तब। कलाई के सहारे हल्के से फ्लिक किया इस गेंद को और प्रशांत लायंदर अभी भी चीती की चपलता दिखाकर उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। भले ही वो झुक नहीं सकते लेकिन पैरों का सहारा लेकर उन्होंने गेंद को रोका। 2 रन बने इस वक्त हबीब ताड़पत्री के लिए। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 31, 31 for 1। हवा में खेला, ओहो, ये मौका गंवा दिया। ये निश्चित एक आसान मौका बन सकता था लेकिन हाथ से लगकर गेंद छिटक गई और 4 रन भी बने। जले पर नमक छिड़कती हुई गेंद गई है चौके के लिए। मिड ऑफ पर यह कैच था, ऐसे ही कैच डोमिनिक फर्नांडिस पकड़ रहे थे लेकिन इस कैच को भी पकड़ना था जरूर। रबानी दफेदार एक अच्छे फील्डर हैं, अच्छी लंबाई है उनके पास, लेना चाहिए था इस कैच को रबानी, लेकिन आज तकदीर साथ दे रहा है हबीब ताड़पत्री का। अगली गेंद डॉट करा रहे हैं, सीध में गेंद को डाल रहे हैं डोमिनिक फर्नांडिस और बॉलर की दिशा में गेंद को खेला, रन नहीं मिला और वापस चले डोमिनिक फर्नांडिस। इस बार बहुत करारा ऑन ड्राइव, कोई मौका नहीं, 4 रन। स्लॉट में गेंद डाल रहे हैं और जैसे देखा हबीब ने कि स्लॉट में गेंद आई है, टूट पड़े उस गेंद के ऊपर, सरपट गेंद को ऑन ड्राइव खेला उन्होंने उस वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में। चौका बनने के बाद ये ओवर समाप्त हो रहा है डोमिनिक फर्नांडिस का। थोड़ा निराश तो जरूर रहेंगे डोमिनिक फर्नांडिस, क्योंकि रबानी ने उनके बॉलिंग पर कैच छोड़ा था। 13 पर सुधर्मा आउट हुए, सुजय 12 पर खेल रहे हैं और हबीब ताड़पत्री 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो अब ओवर समाप्त हुए हैं 5 ओवर के बाद 39 रन बना रही है और साइराज वॉरियर्स के लिए अब 104 रन बनाने हैं और 104 रन बनाने के लिए 90 गेंदों का खेल होना बाकी है, यानी कि 15 ओवर में 104 रनों की चुनौती है। तो पावर प्ले का अंतिम ओवर लाने के लिए तैयार हो रहे हैं वैभव कुरीबागी। आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है वैभव कुरीबागी ने, बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में, भले ही अर्धशतक उनके खाते में तो नहीं बना लेकिन वो जो 45 रन बना रहे थे ये बड़े कीमती भी साबित हुए थे और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं जाकर वो 140 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई थी के शेट्टी किंग्स की टीम। और अब बल्ले का लोहा उन्होंने कई बार मनवाया है और उनके फिरकी के जाल में भी कई खिलाड़ियों को उन्होंने फंसाया है। बड़े भरोसेमंद खिलाड़ी वैभव कुरीबागी हैं टीम के लिए, चाहे वो किसी टीम में हो, वो अपना योगदान 100% देते हैं। आज देखना ये होगा
कि आज कितना अच्छा योगदान देगा अपने लिए, अपनी टीम के लिए। हाँ, ये देखिए अपील हो रही है लेकिन नाबाद करार दे रहे हैं अंपायर मंसूर बड़े भाई। एक तो गेंद लेग स्टंप के बाहर थी लेकिन थोड़ी सी स्लो ओवर बनाई हबीब ताड़पत्री के लिए, कोई रन नहीं बना। कुरीबागी की लेग ब्रेक गेंद हल्के से मिड विकेट के इलाके में खेला। प्रसाद नाकड़ी ने गेंद को उठाया लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ हबीब ताड़पत्री के खाते में। 12 पर खेल रहे हैं हबीब। रन संख्या बनी है साइराज वॉरियर्स 40। 1 विकेट खोने के बाद 40 रन बना रही है। अभी भी 103 रनों की दरकार 88 गेंदों में। ओ, ये सभी को छका कर गई है। विकेट कीपर को छकाया, बैट्समैन को छकाया। 22 के 4 रन बने लेकिन कहीं ना कहीं बाल बाल बचे सुजय सातेरी। ये कहना गलत भी नहीं होगा, तकरीबन गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई। 22 का ये 4 रन स्कोर को आगे बढ़ा रहा है 44। बैकफुट पर गए, पंच किया उस गेंद को सुजय सातेरी। हबीब ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। लॉन्ग ऑन के इलाके में खेलकर अबानी दफेदार ने गेंद को फील्ड किया। 45 1 विकेट के नुकसान पर 45 for 1। और हवा में खेला, डाइव लगाई। ओहो हो, क्या बढ़िया कैच लेने में कामयाब हुए हैं बहुमा। अमित यादव ने कैच को लिया। ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कैच होगा। ये विकेट अगर मिला है बॉलर को तो सिर्फ अमित यादव की वजह से ये विकेट मिला है और सुजय सातेरी वापस लौटेंगे पवेलियन में। तो वैभव कुरीबागी को जिस मकसद से लाया गया था उस मकसद को उन्होंने पूरा किया है कि उन्होंने सुजय सातेरी का विकेट जरूर लिया, लेकिन तारीफ करनी होगी अमित यादव की। क्या क्या कैच पकड़ा उन्होंने। जिस तरीके से पानी में गोता लगाते हैं वैसे गोता लगाना पड़ा उनको। गोता लगाकर 2-3 गुलाटियां मारकर उस कैच को पकड़ा उन्होंने और सुजय सातेरी की पारी समाप्त। जबरदस्त कैच, आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैच होगा। लेकिन एक मैच है अभी, उसमें भी और कई बेहतरीन कैच हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के इस इनिंग्स में अगर हम देखेंगे तो ये जो कैच था अमित यादव उर्फ बाउमा का, वो बहुत बढ़िया था कैच। गेंद तकरीबन डिप होती जा रही थी लेकिन जैसे देखा कि गेंद डिप हो रही है, झोंक दिया उन्होंने और कैच को लिया। 45 पर 2। नए बल्लेबाज किशन मेघराज आए हैं मैदान पर। वैभव कुरीबागी पहले ही बल्ले का लोहा मनवा चुके हैं। अब गेंदबाजी में भी उन्होंने अपना दमखम दिखा रहे हैं। अपने पहली ओवर में एक तगड़े खिलाड़ी का विकेट उनके खाते में जाता हुआ सुजय सातेरी का। सुजय सातेरी 13 रन बनाकर आउट हुए। सुधर्मा कुलकर्णी भी 13 रन बनाकर आउट हुए हैं। शायद विकेट कीपर प्रणय शेट्टी की आंख में कुछ गया है, इसलिए खेल थोड़ा सा रुकता हुआ। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर और अंतिम गेंद।
शायद मौका बन सकता था, थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद गिली, हॉप हॉप खेल गए किशन मेघराज, थोड़े अधूरे मन से उस गेंद को खेल रहे थे। बल्ले का थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, हवा में गई बॉलर के तरफ, लेकिन वैभव कुरीबागी की कोशिश जरूर हुई उस कैच को लेने की, लेकिन उनके सामने गेंद गिरने के बाद उन्होंने रोका। लेकिन एक कामयाब ओवर की समाप्ति हो रही है, पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले समाप्त होने के बाद 45 रन बना रही है साइराज वॉरियर्स की टीम, 2 विकेट खो रही है। अब 84 गेंदों का खेल बाकी और 98 रनों की जरूरत है साइराज वॉरियर्स को। 8 विकेट हाथ में, किशन मेघराज, हबीब ताड़पत्री मैदान पर। अब अंगदराज हिटलमनी कुछ और बदल कर गेंदबाजी करवा रहे हैं कप्तान। एक और उन्होंने जरूर डाला था पवेलियन एंड छोर से, वो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, इसलिए उनको छोर बदल कर गेंदबाजी दी जा रही है। अच्छा खासा हमला बोल रहे थे सुजय सातेरी अंगदराज पर, एक छक्का एक चौका उन्होंने जड़ाया था, लेकिन अब उनको छोर बदल कर आजमाने चले हैं कप्तान। देखेंगे ये छोर बदल कर गेंदबाजी जो कप्तान करवा रहे हैं अपने गेंदबाजों से, क्या रंग लाएगा ये मैच में, देखेंगे। फिलहाल हबीब ताड़पत्री के पास स्ट्राइक है, 12 रन वो बनाकर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके उनके खाते में शामिल। किशन मेघराज अभी मैदान पर आए हैं, कोई रन नहीं बनाया उन्होंने, एक ही गेंद का सामना किया है। देखिए एक थोड़ी सी आक्रामक फील्डिंग लगा रहे हैं, एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात। ओहो, ये एलबीडब्ल्यू, तो छोर बदल कर गेंदबाजी करवाने का जो फैसला कप्तान कर रहे हैं ये रंग ला रहा है। और बहुत नीचे रही गेंद और नीचे रहने के बाद गेंद पैड पर लगी। हबीब ताड़पत्री 12 रन बनाकर वापस लौटे हैं पवेलियन में, तो साइराज वॉरियर्स को तीसरा झटका मिल रहा है 45 पर। KR शेट्टी किंग्स के गेंदबाज धीरे धीरे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इस विकेटों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है साइराज वॉरियर्स की टीम को। तो विकेट बहुत जल्दी जल्दी खोए हैं, ज्यादा एक बड़ी साझेदारी जो बननी चाहिए वैसे तो नहीं बनी। देखिए पहला विकेट 16 पर खोया था, तब 2.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ था, सुधर्मा कुलकर्णी आउट हुए, उसके बाद 5.5 ओवर में 45 पर दूसरा विकेट गिरा सुजय सातेरी का, और अब 6.1 ओवर में 45 पर तीसरा विकेट खो रही है हबीब ताड़पत्री का। तो अचानक 2 विकेट बहुत जल्दी खोए, 2 गेंदों पर 2 ही विकेट खो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक दिलासादायक बात होगी KR शेट्टी किंग्स के लिए कि उन्होंने 3 दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट लिया है। कृष्णा बागड़ी नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर और सामना करेंगे अंगदराज हिटलमनी का। इस गेंद को ऑफ द टोज फ्लिक किया, मिड विकेट के इलाके में गेंद जा रही है, डीप में से फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनेगा। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। किशन मेघराज के पास स्ट्राइक, छोड़ दिया उस गेंद को, थोड़ी सी उछाल लेकर गेंद जा रही है, खेलने का कोई प्रयास नहीं किया किशन मेघराज ने। डेब्यू तो कर चुके हैं साइराज वॉरियर्स की तरफ से किशन मेघराज, आज देखेंगे क्या करेंगे, वो कैसा खेलेंगे। कट किया उस गेंद को, पॉइंट के इलाके में गेंद, स्वीपर कवर के खिलाड़ी प्रसाद नाकाडी ने आकर गेंद को फील्ड किया, खाता खोलने में वो कामयाब हुए हैं किशन मेघराज। पारी की रन संख्या बनी है 47, 47 for 3।
बट नफीतुली गेंदबाजी उस छोर से कर रहे हैं, दूर वाले छोर से अंगदराज हिटलमनी। कृष्णा बागड़ी को फ्लाइटेड गेंद डाली, अच्छी टर्न लेकर गेंद गई है, चारों खाने चित बागड़ी, डॉट गेंद। तो विकेट खोने के बाद रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी बनती हुई साईराज वॉरियर्स के लिए। इस गेंद को जगह बनाकर खेलने की कोशिश, पॉइंट पर गेंद जा रही है, गेंद को रबानी रोक रहे हैं, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। अपील तो जरूर की जा रही थी, एक नाट्यमय तरीके का अपील को खारिज किया सादिक कितूर ने। ओवर समाप्त हुआ, कामयाब ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलाकर 7 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना रही है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन आंखों देखा हाल सुनाने में परिवर्तन हो रहा है। इससे पहले कि नए ओवर की शुरुआत हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर चेतन बेलूर। Oh, what a ball that is. Thank you, Pramod. From here on, it is 78 balls and 96 runs. Krishna Bagadi is batting on 1 run of the 4 deliveries and 3 deliveries. And Kishan Megraj is also batting on 1 run of the 4 deliveries. And to face now, it is Kishan Megraj to face Vaibhav Kuribagi. Steps out and plays it onto the onside there. Towards a square leg, Prasad Nakadi comes in and fields and throws. A good fielding there by Prasad Nakadi down on the deep square leg boundary as the batsman cross over for a single. With that single, the scorecard ticks along to 48 now for the loss of 3 wickets. These 2 batsmen have a job on hand to do to build up an innings and partnership for themselves and the team. Krishna Bagadi onto the back foot and punched it straight to the field at cover. Darshan Patel, the captain there, for a dot ball. Again onto the back foot and driving it to the cover region. Darshan Patel, the cover fielder there, straight to the field. Good fielding as well. Good shot also, but straight to the field. Importantly, a dot ball. Good bowling by Vaibhav. This time going to the back foot and cutting him into the extra cover, sweeper cover region. Wide-ish of sweeper cover for a boundary this time. Darshan Patil just a spectator. The ball being wide of Darshan Patil there for a boundary. With that boundary, the scorecard for the ticks along to 52 for the loss of 3 wickets. Played it up over the ball out there with soft hands. Krishna Bagadi. Rabani Dafadar comes in quickly and fields the batsman crossover for a single. Well, there was an outside chance for catch. With that single taken, it also completes the overs after the completion of 8 over scorecard reading 54 runs. (53)
Good running this time by Kishan Meghraj and Krishna Bagadi. With those 2 runs, the scorecard for the ticks along to 55 now. 10 runs, the partnership between Krishna Bagadi and Kishan Meghraj. Well, it is Yasir Nihal in the bowling attack. He comes with his bowling quotas first over and innings 9th over to the batsman Krishna Bagadi. Again playing it onto the onside of his pads there towards the square leg. The fielder comes in and fields Salman Gokakar there. Slightly fumble, but a good covering and backing up by Angadraj Hittalmani. 1 run for the taking. With that single, the scorecard for the ticks along to 56 for the loss of 3 wickets. That gets Kishan Meghraj on strike to face Yasir Nihal. And he's been clean bowled there. What a piece of bowling there by Yasir Nihal. Kishan Meghraj in 2 minds, wanting to drive it, wanting to play a defensive shot. Beaten all ends up, was very slow till the bat came down in playing that shot, and he's been clean bowled by the bowler Yasir Nihal. So the 4th wicket goes down in the form of Kishan Meghraj, who managed to get 2 runs of the 5 deliveries with no boundaries and no single sixes. 4th wicket goes down in the form of Kishan Meghraj, and with that the next batsman to walk into the crease is well, at the fall of Kishan's wicket, it is Shubham Gondwadkar walking onto the crease. Shubham Gondwadkar and Krishna Bagadi have a job on hand to do now. Try and build the innings. The 4 wickets are down. They need another 87 runs in 69 balls left over in this match. KR Shetty Kings have really kept it tight here. Down the leg side, you've got to wait and watch Prashant Layandar running behind it. Gives the chase, gives it up. Wide signaled by umpire, acknowledged by my scorer. 5 runs for the taking in the form of 5 wides. With those 5 wides, the scorecard ticks along to 61. Oh, got to wait and watch. Hyde doing the job there. We got to wait not only the batsman but also the wicket keeper. Beat up leg by, signaled by umpire, acknowledged by my scorer. 1 more run in the form of an extra. The scorecard ticks along to 62 for the loss of 4 wickets. Trying to cut him there, straight to the gully. Angadraj Hittalmani there for a dot ball. Every dot ball will be cheered by KR Shetty Kings, and runs will be encouraged by the batting side, Sairaj. Again, the bounce doing the job, trying to cut him there. Krishna Bagadi straight to the field. Angadraj Hittalmani there. Importantly, a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 9 overs. A scorecard reading 62 for the loss of 4 wickets. Krishna Bagadi is batting on 9 runs of the 11 deliveries, and Shubham Gondwadkar yet to open the account, and the partnership between Krishna Bagadi and Shubham Gondwadkar is 6 runs of 3 deliveries that they have faced.
Another 81 runs required of 66 balls there. Flighted delivery and good ball, leg cutter there, leg spin there by the bowler Vaibhav Kuribagi. And to tell you that Vaibhav Kuribagi has all the variation in his bowling. He also bowls the off spin, leg spin, the slower one, the faster one. Again, leg spin ball there, straight to the bowler himself in his follow through. Batsman Shubham trying to play him off the back foot. So 2 dot balls in succession. Good bowling there by Vaibhav Kuribagi. This time flicking off his pads there down towards the fine leg. Prasad Nakadi comes in from square leg and fields the batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 63 for the loss of 4 wickets. With that, Shubham Gondwadkar opens his account, 1 run to his name, and takes the scorecard ticking along to 63 runs. Again, going on the back foot and cutting him there towards the cover. Darshan Patil there. By the time he fields, the batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 64. .4 overs have been bowled and the scorecard reading 64 runs. Going on to the back foot and again driving him a wideish off long off. Dominic Fernandez comes in and fields the batsman cross for a single. With the single taken, the scorecard further ticks along to 65 for the loss of 4 wickets. 9.5 overs have been bowled. 1 more ball before the completion of this over, and drink shall be called on to the ground. Well, the edge there of the bat, got to wait and watch. The ball running towards third man there. And wanting two runs for the taking. So 2 good runs there, I would say. With those 2 runs, the scorecard ticks along to 67 after the completion of 10 overs. And Drinks is called onto the field. 10 overs have been bowled on the scorecard reading 67 for the loss of 4 wickets. Krishna Bagadi batting on 12 runs of 13 deliveries. And Shubham Gondwadkar is batting on 2 runs of the 5 deliveries. Both these batsmen together have put up a partnership of 11 runs between themselves. And taken the scorecard reading to 67 at a current run rate of 6.70 runs per hour. So another 76 runs more required of 60 deliveries left over in this match. This match is very evenly and equally poised halfway through the innings. 10 over 67. Another 10 overs to be bowled and required is 76.
Well, coming back, it is Yasir there. The first ball after his drinks break is being taken, and play resumes after drinks break. Another single for the taking. With that single, the batsman crossed over and take the scorecard ticking along to 68. Again, down the leg side there, wanting to play it, but no, says Shivam. Krishna Bagadi wanting a run, trying to play off the legs of the toes there towards the onside. Beaten all ends, a big appeal, but umpire quite rightly put it down as the ball drifting down towards leg stump. Importantly for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 68 runs. Stepped out and cross-batted shot. He plays it over the line for a huge six there. What a shot that was at the bat of Krishna Bagadi. Paddle sweeping it, going to the pitch of the ball, and paddle sweeping it over square leg for a huge six. With that six, the scorecard further ticks along to 74 for the loss of 4 wickets. Well, the next match this afternoon to be played is between Vision Strikers versus Xavier Gallery Diamonds, and if the captains are here, they can please pick the list up from the commentary box, your playing 11 list, and submit it quickly. Thank you. Again, have the back foot played off his hips and pads towards the deep mid-wicket area. Vaibhav comes in and fields the batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 75 for the loss of 4 wickets. Outside the offside, you've got to wait and watch there. Not a clean take there by the wicket keeper. Wide signaled by umpire Sadiq. So 2 more for the taking in the form of wides as the batsman also crossed over. So those 2 more runs, the scorecard ticks along to 77 for the loss of 4 wickets. Yasir Nihal, slightly expensive. Onto the back foot and played with soft hands there. Salman Gokakar comes in and fields another run for the taking from the short third man region. The scorecard ticks along to 78. 10.5 overs have been bowled and the scorecard reading 78. Well, pretty much again trying to go onto the back foot and drive him, beaten all ends up. A good stop there by wicketkeeper Pranay Shetty for a dot ball. So in that dot ball, 11 overs have been completed and the scorecard reading 78 for the loss of 4 wickets. Another 65 more runs required in 54 balls left over in this innings and match. 65 more runs of 54 balls. Subham Gangwarkar is batting on 3 runs of the 7 deliveries, and Krishna Bagadi is batting on 20 runs of the 17 deliveries. A good 22 run partnership between these 2 batsmen of the 15 deliveries that they have played. We have a match on here, going at a current run rate of 7.09 runs per over, and these 2 batsmen can take it, push it a little more further, well within their reach now. Meanwhile, KR Shetty Kings will also be looking to try and strangulate, get maybe 1 or 2 more wickets and pressurize the batting side. Sairaj, Darshan Patil, the captain, will have all the thinking to do, and is now bought as one of his trump cards in the form of Dominic Fernandez coming into the act with his bowling quota's 3rd over and innings 12th over to the batsman Krishna Bagadi. Played with straight batted shot straight to the cover fielder Darshan Patil there
for a dot ball. Full pitched delivery up to the batsman there. Then Krishna Bagadi just trying to drive him in the offside, straight to the field at cover region for a dot ball. Once again, Dominic Fernandez in his run up to the batsman Krishna Bagadi. Shot of length there, using the pace of the ball and steering it and guiding it towards wideish of third man. Salman Gokakar, the fielder, coming in and fielding 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard further ticks along to 80 runs now for the loss of 4 wickets. And Krishna Bagadi moves to 22. Again played with soft hands there, straight to the bowler himself in his follow through for a dot ball there. Good bowling there by Dominic Fernandez, not giving any width and room to the batsman, keeping it very tight. Good line and length to the batsman Krishna Bagadi for a dot ball. Clean ball there, and this that what we were talking, trying to keep the line straight there, picks up that first wicket in the form of Krishna Bagadi. First wicket for Dominic Kark today. Dominic Fernandez, I would say. Well, at the fall of Krishna Bagadi's wicket, it is Narendra Mangore walking onto the crease there to take guard. Meanwhile, SHETTY Kings will be encouraged and boosted up with this wicket that they took of Krishna Bagadi. Well, we have Anil Gavi, the commentator, into the commentary box here. And he's really done it well to keep it intact, giving us a wonderful pitch, beautiful ground to play. Anil Gavi, the groundsman, is doing a lot of things along with his assistant Jyoti Patil. They've done it well enough. Many a times it has rained also in this tournament, but they have been tirelessly working in this tournament to give a good pitch on the ground. Coming back to the match, Narendra Mangore to face Dominic. And a full pitch delivery, getting the bat down quickly and driving it towards long off. Rabani Dafadar comes in and fields the batsman crossover for a single. With that single, Narendra opens his account and takes the scorecard ticking along to 81. Good ball there, and beaten all ends up into the hands of the keeper. Not a clean take though, but everyone, the bowler, also the wicket keeper, trying to tell how did it miss the stumps there. Very close to the off stump. Full pitch delivery. Good bowling there by Dominic Fernandez to finish that over with a dot ball. With that, 12 overs have been bowled on the scorecard, reading 81 for the loss of 5 wickets. Shubham Gangwarkar is batting on 3 runs of the 8 deliveries, and Narendra Mangore is batting on 1 run of the 1 deliveries. These 2 batsmen have a big job on hand to do there. Try to build an innings and partnership for themselves and the team. Also take the scorecard ticking along further if at all they have to win this match. A target set by SHETTY Kings. Batting first, they got 142. And if Cyrus have to win, they have to get 143 to win this match. And in doing so, they lost 5 of their batsmen. Half of the side is back in the dugout.
The two men are Narendra Mangore and Shubham Gondwarkar, both well capable of getting runs there. Meanwhile, KR Shetty Kings will be looking to try and pick another wicket or so and pressurize these batsmen. It is Yasir Nihal once again. Yasir Nihal in his third over and innings 13th. Down the leg side, we got to wait for the umpire signal. This time, fine leg being a very fine and wide signal there. One more run in the form of an extra, and the total moves up to 82 for the loss of 5 wickets. Down the leg side, a good shot there by the batsman and good stop as well by the mid-wicket fielder there, Vaibhav Kuribagi, single-handedly stopped. Meanwhile, 2 runs for the taking. 2 runs for the taking, and the scorecard moves to 85. Oh, good stop there by Darshan. Direct hit maybe, they had a chance, but the batsman survived. What a piece of fielding there by the captain himself, leading from the front. Darshan Patil saved a certain boundary, saved 3 runs for himself and the team, just giving away a single, and also the batsman survived. With that single taken, the scorecard for the ticks along to 86 runs. Big appeal, but height is there. What umpire says, we've got to wait for the umpire signal. Leg by signal, one more in the form of an extra, and the scorecard ticks along to 87 now. $87 for 5. Flicked off his pad there down towards the square leg fielder. Rabani Dafedar comes in and fields on the bounce. The throw comes in. The batsman have to settle down for a single. With that single, the scorecard for that ticks along to 88 runs. Narendra Mangore and Rabani Dafedar played together many times in the same team. Now that they are playing against each other, best of friends. Again trying to drive it straight to the fielder there in the point region. Angadraj Hittalmani. Importantly, a dot ball for KR Shetty Kings and Yasir Nihal. The ball keeping low there than anticipated. Not a clean take, but a stop, I would say. With that dot ball, it also completes the overs. After the completion of 13 overs, scorecard reading 88 for the loss of 5 wickets. Another 55 more runs required of 42 deliveries left over in this innings and before the completion of this match. And in doing so, Narendra Mangore is batting on 1 run of the 4 deliveries. And Shubham Gondwarkar is batting on 7 runs of the 11 deliveries that he has faced. Narendra Mangore and Shubham Gondwarkar have put up a partnership of 8 runs of the 8 deliveries between them. And it is 13 overs ball, the scorecard reading 88 for 5. Angadraj Hittalmani comes with his bowling quota's 3rd over and innings 14th over to the batsman Shubham Gondwarkar. This match is very evenly poised. Down the leg side, we got to wait for the umpire signal. Meanwhile, ball going towards third man. Wide signal there by the umpire, acknowledged by my scorer. 2 more for the taking. With those 2 runs, the scorecard ticks along to 90. Again down the leg side, but this time no, says umpire, maybe hitting the pads there.
Good shot there, good cut shot, a misfield by the fielder in the gully region there for a boundary. Good shot by the batsman Narendra Mangure for a boundary. So first 4 of his bat today. With that boundary, the scorecard moves to 94 now, and Narendra Mangure moves to 5 runs. So equation getting closer and closer, thinner and thinner. It is 49 of 40 deliveries. Oh, again wanting there, yes, no, yes, in the end. Shubham wanted that run always for the taking. By signaled by umpire. One more run in the form of an extra, and the scorecard ticks along to 95. They require another 48 runs of 39 deliveries. And no, says umpire. Down the leg side. Ball pitched in leg stump, and also the way the batsman wanting to play there. Shubham not been in impact in the line. Outside leg stump. Played with soft hands there. Wanted to play on the onside. Last minute just played with soft hands. The ball rolling onto the pitch area. Wicket keeper Panay coming in and fielding. And also a dot ball. Slightly quicker and going onto the back foot and driving towards the long off field. Rabani Dafedar and comes and fields. 1 run for the taking. With that, well, it's all happening between the two friends there. Batsman Narendra Mangure wanting a run, and Rabani Dafedar asking him, come down to halfway of the pitch, my friend. Both good friends, Rabani Dafedar and Narendra Mangure. They played in the same teams earlier. Now that they're playing against each other. 1 run for the taking with that single. It also completes the overs after the completion of 14 overs. So scorecard reading 96 for the loss of 5 wickets. Narendra Mangure is batting on 5 runs of the 7 deliveries, and Shubham Gandwadkar is batting on 8 runs of the 14 deliveries. They require another 47 runs in 36 balls left over before the completion of this innings and the match. Oh, 3 guys are inside edge, maybe we call it as the bottom edge, the inside edge, the Chinese cut as my friend calls me. But 1 run for the taking. You really can't set field for this kind of a shot. Lucky enough for the batsman, the ball not hitting the stumps after taking an inside edge. A fine leg being very fine there in the form of Prashant Lander. 1 run for the taking. With that single, the scorecard ticks along to 97. Driven it towards long off, the fielder comes in from deep long off and fields the batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 98 for the loss of 5 wickets. That gets Shubham on strike. Trying to play a big one there. What a shot that is at the bat of Shubham Gandwadkar. Cutting loose this time. He's been playing there with patience, and now when the ball is pitched up to him, a lofted drive towards wideish of mid wicket for a boundary. With that boundary, the scorecard further ticks along to 104. So 100 comes up for Sairaj in the 15th over, and Shubham moves to 15. He's been clean bowled there. Good comeback by Yasir Nihal, trying to cut him. The ball being straight enough to rattle the stumps. And Shubham will have to go back to the pavilion at a score of 15 runs of 17 deliveries that he faced. Well, the 6th wicket goes down in the form of Shubham Gandwadkar, got 15 runs. Sairaj Warriors require another 39 more runs of 32 deliveries left over in this match. 14.4 overs have been bowled on the scorecard reading 104 for the loss of 6 wickets. Yasir Bal picks up his second. Yasir Nihal
picks up his second wicket. Slightly costlier today. Is bowling at an economy of 9 runs per over. 3.4 overs is bowled. Given over 33 runs and picked up 2 wickets. Abhishek Desai, the captain, walked shot to the crease at the fall of Shubham Gandwarkar. Abhishek Desai to face the bowler Yasir Nihal. Abhishek Desai to face Yasir Nihal. Well, down the leg side there, played, flicked off his pads there, one-handed shot. Vaibhav Kuribagi comes in from square leg, wide-ish, and fields the batsman cross for 2 more runs. With those 2 runs, Abhishek opens his account and takes the scorecard further ticking along to 106 for the loss of 6 wickets. 1 more delivery before the completion of this over, and the scorecard reading 106 for the loss of 6 wickets. Played with soft hands, wanting a single there, directed, we got to wait and watch, but no says umpire, and 1 run for the taking. With that 1 run, we have to wait now. There is a television review. धन्यवाद चेतन। तो नजदीकी मामला था, लेकिन सही समय पर वो पहुंच गए अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर, बाल बाल बचे भी। तो देखिए, कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं। 107 रन हुए हैं, 30 गेंदों का खेल बाकी। 36 रनों की जरूरत है साइराज वॉरियर्स की टीम को। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं गेंदबाज वैभव कुरीबागी। अभिषेक देसाई के लिए ये गेंद तकरीबन प्लेड ऑन होते होते बचे हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पैड पर लगी और वहीं पर लुढ़क कर रह गई। कोई रन तो नहीं बना, लेकिन डॉट गेंद बड़ी मायने रखेंगी शेट्टी किंग्स के लिए। और अब वैभव कुरीबागी तैयार अभिषेक देसाई के लिए। और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर बल्ले का मुंह खोलकर खेला। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग और थ्रो हुआ। प्रणय शेट्टी ने कोई गलती नहीं की। नरेंद्र मांगू ने रन आउट होकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। अंगदराज हिट्टलमनी चिति की सफलता दिखा रहे थे। एक ही एक्शन में पिकअप और थ्रो किया उन्होंने। सपाट थ्रो विकेट कीपर प्रणय शेट्टी के दस्तानों में आया। पलक झपकते ही उन्होंने गिल्लियों को उड़ा दिया और नरेंद्र मांगूरे जैसे अच्छे बल्लेबाज का विकेट अब कहीं जाकर मिलता हुआ KR शेट्टी किंग्स को। 6 रन वो बना रहे थे। बड़े दुर्भाग्य कहना चाहिए उनका कि अंगदराज हिट्टलमनी के सामने गेंद को खेलने के बाद हिम्मत तो जुटा रहे थे रन लेने की, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई और रन आउट होकर वापस लौटना पड़ा पवेलियन में। बड़ा झटका ऐसे मौके पर मिल रहा है साइराज वॉरियर्स के लिए, जहां पर उनको विकेट नहीं खोना चाहिए था, लेकिन सही समय पर विकेट भी मिलता हुआ KR शेट्टी किंग्स के लिए।
और रोचक मोड पर यह मैच आता हुआ। अब देखिए, अब अभिषेक देसाई का साथ देने के लिए मैदान पर आए हैं विशाल बड़का आए हैं मैदान पर। लेकिन क्या बढ़िया फील्डिंग, क्या बढ़िया थ्रो, और नरेंद्र मांगुरी जैसे तगड़े बैट्समैन का विकेट लेकर थोड़ी सुकून की सांस, राहत की सांस तो ले रही है KR शेट्टी टीम के खिलाड़ी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है KR शेट्टी किंग की टीम के लिए, और बहुत कुछ करना है साइराज वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। हमने पहले कहा था कि ये मैच हाई वोल्टेज मैच होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होगा। दोनों टीम के खिलाड़ी बड़े जुझारू खिलाड़ी हैं, लड़ाकू खिलाड़ी हैं। इतनी जल्दी दोनों ही टीम के खिलाड़ी हार नहीं मानेंगे। लेकिन वैभव कुरेबागी तैयार हो रहे हैं विशाल बेड़का के लिए। ओ क्लीन बोल्ड हुआ, पूरी तरीके से चकमा खा गए। विशाल बेड़का हाजिरी लगाने का काम किया है उन्होंने, और बहुत नीचे रही गेंद, और डिफेंस भी तगड़ा नहीं बना रहे थे। थोड़ी सी गेंद के लाइन से अलग होकर वो खेल रहे थे, और जो गेंद नीचे रहकर आई उस पर वो बीट हुए और क्लीन बोल्ड हुए। 8 बार झटका मिलता हुआ 2 गेंदों पर 2 विकेट खो रही है साइराज वॉरियर्स की टीम। अचानक ताश की पत्तों की तरफ पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। पहले रनआउट हुए नरेंद्र मांगुरे, उसके बाद विशाल बेड़का को जो गेंद आई बहुत नीचे रही, और नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ा कमजोर डिफेंस उनका, और उस कमजोर डिफेंस जो था उसको छकाकर गेंद गई स्टंप्स के ऊपर। तो देखते ही देखते पासा पलटता हुआ इस मैच का, सर के बल ये मैच उलट सकता है। लेकिन अनिकेत लोहार आए हैं मैदान पर। जब तक अभिषेक देसाई मैदान पर है तब तक निश्चित तौर पर साइराज को उम्मीदें हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत बार उन्होंने ऐसा किया है कि अच्छी पारी खेली है उन्होंने कई बार। इस गेंद को बल्ले पर आने दिया, पॉइंट के ऊपर गेंद को खेला, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद फील्ड हो रही है, कोई रन नहीं मिलता हुआ अनिकेत लोहार को। रन संख्या तो अभी भी 107 पर रुकी है। अब 27 अच्छी गेंद, अच्छी फ्लाइट दे रहे थे, लेकिन अनिकेत लोहार संभल कर खेल रहे हैं, लालच में नहीं आ रहे हैं। आमंत्रण तो जरूर दे रहे थे उस फ्लाइटेड गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन आमंत्रण को स्वीकारा नहीं है उन्होंने। 25 गेंदें बची हैं, 36 की जरूरत है। वैभव कुरेबागी इस ओवर में कोई रन नहीं दे रहे हैं। ओ इनसाइड एज लेकर गेंद गई, स्टंप्स के बिल्कुल पास से गई है। फाइन लेग के इलाके में मेडन विकेट ओवर समाप्त हो रहा है, और वो भी 16वां ओवर। मेडन विकेट ओवर समाप्त करना कोई मामूली बात नहीं मानी जाती T20 के फॉर्मेट में। आमतौर पर 16वें ओवर में बहुत सारे रन आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियां अलग नजर आ रही है। वैभव कुरेबागी ने अपना कोटा पूरा किया है गेंदबाजी का। 4 ओवर 1 मेडन, 13 रन 2 विकेट। आज बल्लेबाजी भी उन्होंने दमदार की, 45 रन वो बना रहे हैं, और गेंदबाजी में भी उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया है। और 4 ओवर 1 मेडन, 13 रन देकर 2 कीमती सफलताएं उनके खाते में जा रही है। तो वैभव कुरेबागी चाहे बल्ले से हो या फिर गेंद से, वो हमेशा छाए रहते हैं मैदान पर। तो अब देखिए, अब 24 गेंदों का खेल बाकी, और 24 गेंदों में 36 रनों की दरकार। ये मैच किसी का भी हो सकता है, कह नहीं सकते कि परिणाम क्या होगा, अंजाम का क्या होगा, इस मैच का कौन जीतेगा। साइराज वॉरियर्स जीत की परंपरा क्या जारी रखने में आज भी कामयाब होंगी, या फिर KR शेट्टी किंग्स इस परंपरा को आज तोड़ेंगे। ये रोचकता बनी रहेगी इस मैच के अंत तक। तो मल्लेश चौगुले आए हैं मंच पर, उनका स्वागत है KR शेट्टी फाउंडेशन की तरफ से। आज प्रमुख अतिथि हैं। तो देखिए, अब बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं मैदान के बीच में, बल्लेबाजों के बीच में। हेलमेट डालकर खेलने का फैसला कर रहे हैं
अभिषेक देसाई क्योंकि रबानी दफेदार रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये सही निर्णय भी ले रहे हैं अभिषेक देसाई, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट में एक गेंद लगी थी उनको, लेकिन उससे उन्होंने सबक जरूर सीखा है। और हम हमेशा चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड ना हो, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा इंजर्ड हो जाता है, जख्मी हो जाता है, तो वो टूर्नामेंट से बाहर होने की नौबत आती है, तो फिर टीम को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसा रहता है जो अच्छी बल्लेबाजी करता है, फील्डिंग करता है, गेंदबाजी करता है, और वही अच्छा खिलाड़ी अगर टीम से बाहर हो जाए चोट की वजह से, तो टीम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्लीन बॉल हुए रबानी दफेदार, और एक उम्मीद की किरण थी, वो थी अभिषेक देसाई के ऊपर, लेकिन सुबह बनकर गेंद सीधे स्टंप्स के ऊपर और बोल्ड हुए। अभिषेक देसाई का बड़ा विकेट मिलने के बाद अब 9वां विकेट खो रही है साईराज वॉरियर्स की टीम, और अब बहुत मुश्किल में आई है साईराज वॉरियर्स की टीम कि आर शेट्टी किंग्स के गेंदबाजों ने आज कमाल की गेंदबाजी की है, और अब अभिषेक देसाई के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। ये एक ऐसे बैट्समैन थे मैदान पर जो ये सब कुछ कर सकते थे अपनी टीम के लिए, लेकिन रबानी दफेदार ने उनको क्लीन बोल्ड किया। गेंद गुडलैंड पर गिरी, सुर्रा बनी, सरपट गेंद आई स्टंप्स के ऊपर। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर साईराज वॉरियर्स के बल्लेबाज आज कहीं ना कहीं खोए खोए बुझे बुझे से नजर आए। शेट्टी किंग्स के गेंदबाजों के सामने बड़ी दमदार बल्लेबाजी की क्षमता रखती है साईराज वॉरियर्स की टीम, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी उनकी होनी चाहिए। सुधर्मा कुलकर्णी, सुजय सातेरी, हबीब ताड़पत्री, किशन मेघराज, कृष्णा बागड़ी, शुभम गोंडाडकर, नरेंद्र मांगुरे और अभिषेक देसाई, ये सभी तगड़े बल्लेबाज हैं। इस सभी तगड़े बल्लेबाज कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, और हमारे स्कोरर रवि मुझे कुछ जानकारी दे रहे हैं कि 3 रनों पर 4 विकेट खो रही है। 3 रन आए हैं साईराज वॉरियर्स के लिए, लेकिन इस 3 रन बनाने के चक्कर में 4 विकेट भी खो रही है। धन्यवाद रवि। और अब आखिरी जोड़ी मैदान पर यार्कर लेन की गेंद को हल्के से मिड विकेट के इलाके में धकेला है रघु पाटिल ने, खाता खोला उन्होंने, और पारी की रन संख्या बनी है 108 for 9। अब आखिरी जोड़ी, क्या ये जो 35 रन बनाने हैं वो बनाकर एक इतिहास रचेगी, ये सवाल है, या फिर जो 1 विकेट दूर है जीत हासिल करने के लिए क्या आर शेट्टी किंग्स, क्या वो विकेट हासिल करते हुए 2 अंक अपने खाते में हासिल करने में कामयाब होंगे, ये भी सवाल है। इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा हम सबको। स्लोअर वन डाल रहे थे, बहुत अच्छा इस्तेमाल गति का, बड़े बुद्धिमान गेंदबाज है रबानी दफेदार, बहुत सारी गेंदें ऐसी डालती हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता बल्लेबाज। एक स्लोअर वन थी, स्टॉक गेंद उन्होंने डाली जहां पर डॉट बनता हुआ। अब देखिए समीकरण और इस मैच का बदलता हुआ। 21 गेंदों का खेल बाकी, 21 गेंदों में 35 की आवश्यकता, 30 गेंदों में 36 चाहिए थे। स्लोअर वन एक बार और लेग ब्रेक गेंदबाज की तरह डाल रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हैं दूर से, लेकिन वो जब गेंद डाल रहे हैं मानो लेग ब्रेक बॉलर हूं, इस तरीके की वो गेंदबाजी करते हुए रबानी दफेदार। डॉट गेंद हो रही है। तो अब इस आखिरी जोड़ी मैदान पर जो है अनिकेत लोहार ने खाता नहीं खोला,
और अब सामना करेंगे रब्बानी दफेदार का। ओहो, यहाँ पर विकेट गिरता हुआ बाहरी किनारा लिया गेंद ने बल्ले का और जीत की परंपरा खंडित करने में कामयाब हुई है KR शेट्टी किंग्स। साईराज वॉरियर्स को जबरदस्त धक्का दिया है इस मैच में। 143 रन साईराज की बल्लेबाजी को अगर आप देखेंगे तो बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग योजना लेकर मैदान पर उतरी KR शेट्टी किंग्स की टीम और उन्होंने एक जबरदस्त जीत हासिल की है साईराज वॉरियर्स के खिलाफ, और वो भी बड़ी जीत, बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं और 34 रनों से जीत हासिल की है पोद्दार ब्रदर्स KR शेट्टी किंग्स की टीम ने। जीत की जरूरत भी थी KR शेट्टी किंग्स को वर्तमान श्रृंखला में जीवित रहने के लिए, अपना सफर आगे बढ़ाने के लिए। ये जीत बहुत बड़े मायने रखेंगी, आगे चलकर उनको फायदा भी होगा इस जीत का। लेकिन 3 मैचेस जीतने के बाद साईराज वॉरियर्स को हार का सामना करना पड़ रहा है इस मैच में। तो जीत की परंपरा रोकने में KR शेट्टी किंग्स कामयाब हुई हैं। साईराज को उन्होंने मात दी है इस मैच में। अब थोड़ी देर में पारितोषिक वितरण समारंभ होने जा रहा है। दोनों टीम्स तैयार होकर जल्द से जल्द मंच पर आए, क्योंकि इसके बाद एक और मैच हमें खेलना बाकी है। तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, सिर्फ 16.5 गेंदों पर उनकी पारी सिमट गई है। तो दोनों टीम्स के लिए सूचना कि जल्द से जल्द तैयार होकर हमारे मंच के सामने आए। पारितोषिक वितरण समारंभ होने जा रहा है। विश्रुत स्ट्राइकर्स और जेवर गैलरी डायमंड्स दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें और जल्द से जल्द अपना प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे तरफ ला कर दे, क्योंकि 15 मिनट में टॉस होने जा रहा है।
I request both the teams to come for the presentation. Thank you. And next match to be played is between Xavier Gallery Diamonds versus the Vicious Strikers. Both of you please pick a list from the commentary box. Thank you. Xavier Gallery Diamonds and Vicious Strikers. Please pick a list. Thank you. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down tonight. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out.
Sanjay sir, Sanjay Sapuri, wherever you are, you wanted here, please. संजय सापुरी आप ही वर्कवास थे, आप ग्राउंड में कहीं भी हो, जरा कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. थैंक यू. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Well, boys, we are here for the presentation of the match played between Sairaj Warriors versus KR City Kings. Before I start with, I request Mr. Mallesh Shodle, Siddhappa Kamble, Fail Naikwadi and Sanjay Sapuri to please come up here on the stage. Thank you. Will you please welcome all the gentlemen here on the stage. Well, boys, if you can just put your hands together for these people who are here, we welcome you. First and foremost, the losing captain. If you can just come, I'll finish quickly.
वेल अभिषेक, हार्ड लक ऑन द लॉस टुडे. सायराज जो इतनी अच्छी टीम है और नंबर 1 रैंक पॉइंट्स टेबल में ऊपर है, आज ऐसी क्या बात हो गई कि आपको हारना पड़ा? एक आना था तो ये आज आया है. हाँ यही तो, एक तो आना ही था सर, लेकिन पिच भी थोड़ा सा उतना प्लेएबल नहीं था बैटिंग के लिए. फिर भी हमारे मिडल ऑर्डर थोड़ा अच्छा खेले थे, वो थोड़ा सेट बैट्समैन कंटिन्यू करते थे तो थोड़ा जल्दी होता था, रन कवर कर सकते थे. और 20 रन में 6 विकेट डाल दिया हमने. थोड़ा पिच का विकेट और बबलू वे का रनिंग. हर वक्त आप जो खेलते हैं, जब तक बबलू का विकेट नहीं जाता है नरेंद्र मांगोरे का, तब तक गेम अलग रहती है. आज भी वही हुआ. जैसे ही नरेंद्र मांगोरे का विकेट गया, 3 रनों में 4 विकेट आपने खोए. आप जानते हैं ये बात को? यस सर, मेरा तो अनफॉर्चुनेट था कि विकेट बहुत खराब आया, बॉल बहुत नीचे से आया तो विकेट उसको कुछ नहीं कर सकता. तो बाद में लास्ट टेल एंडर तो नहीं कर सके कुछ भी सर. कोई बात नहीं, आप इस हार से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा. लेकिन आप क्या कहना चाहोगे सैराज जैसी टीम को? अगले भी बहुत सारे मैचेस है आपके, क्या कहना चाहोगे? वो कमबैक तो जरूर करेंगे सर अच्छे से, और कमबैक करने वाली जैसे प्लेयर्स है सर वो करते हैं, हम करेंगे सर कमबैक. हार्ड लक टुडे बट ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you very much. That was captain of Sairaj, and now we have the captain of KR SHETTY Kings. Darshan, if you can come up. Well, Darshan, congratulations on this win. How would you rate this win? This was very important for you and your team. How would you rate this win? I think it was a great effort from the bowlers as well as the fielders. There was a run out and also a brilliant catch by Amit. I think that made the difference to the game. And now your team is looking completely different and you have a strong hold on the points table. What would you like to tell your boys? I think to keep the things simple as they are. I think the wicket looks a bit tricky from now on. So just play along with the ground and keep some runs on the board and give bowlers a chance to bowl. You know everything and you're analyzing it so well that you have played so much of cricket here on this ground. You know how the pitch has started behaving now and you can capitalize on that. All the best for the remaining matches and congratulations today. Thank you, Darshan. Thank you. Cheers. Thank you very much. That was Darshan Patel, the captain of KR SHETTY Kings. We have plenty of awards to be given away. First and foremost for the best catch. No doubts and questions for that. It goes to none other than Amit Yadav, Bauma, nicknamed as. This award to be given away by Fahim Naikwadi. If you can please come forward and give this award for the best catch. It is one of the finest in the tournament up till now. Thank you, Fahim, and thank you, Amit. The next one we have is for the maximum sixes. No guesses and prizes for that. The longest and out of the park over the trees. It goes to Dominic Fernandez, and I request Sanjay Satiri sir to please give away this award of the maximum sixes. Dominic Fernandez. Now we have to decide who to be the man of the match, and it is a tough one as well, and this one goes to, sorry, it is the impact one. It was a tough ask for us to decide between the man of the match and the impact. This award to be given away by Mr. Siddhappa Kamble, if you can come forward. 2.5 overs, 10 runs and 3 wickets. Rabbani Dafadar. Rabbani, you also get a special prize of 1,000 rupees from Salman Gokakar. He's more interested in that rather than the trophy. Congratulations, Rabbani, for that wonderful performance of 2.5 overs, 10 runs and 3 wickets. Impact player of the match. You will get a beautiful trophy and also a wonderful shaker for your diet and enhancement of your performance. Man of the match, no guesses and prizes for performance with bat and ball. Young lad leading from the front, missed out on a 50, 45 runs of 44 balls, 4 overs, 13 runs and 2 wickets. Vaibhav Kuribagi. Well, Vaibhav, if you can come quickly, I'll finish off with one question. First and foremost, congratulations, Vaibhav. You got many man of the matches awards. How do you feel taking this man of the match award? I'm feeling happy because we won the match, and
What was running, or what did your captain tell you? Because I could see you, Darshan Patil, telling you a lot of things. Rabani was telling you to do something when you were bowling. What did they tell you? क्या कह रहे थे और आपने क्या किया? कुछ नहीं, बस बेसिक्स पे फोकस करो, उतना बोल रहे थे तो उतना ही मैं किया. All the best, congratulations. और बहुत सारे मैन ऑफ द मैच आपके साइड से देखने को मिलेंगे विथ एंड बैट एंड बॉल. Yes, sir. Congratulations, all the best. Please pick your award at the hands here only. Here at the hands of Mullesh Chowdhury. You get a beautiful trophy and also a T-shirt and also DTH connection from Metrocast. We thank CEO Sumok Chabria and also Nagesh Chabria. Boys, for the Man of the Match award, if you can clap hands. Thank you very much. And you also get 1 year subscription free. Congratulations, and we had a wonderful man of the match and an impact play this afternoon. Thank you, Mullesh Chowdhury, Siddhappa Kamble, 5 Naikwadi, and also Sanjay Santari sir. Thank you very much. That's all that we have. And we thank Nagesh Chabria, Sumok Chabria for giving us that 1 year subscription free from Metrocast worth 7,500. Thank you very much.